President IEEMA and the President-elect IEEMA to please join on the stage and escort the Honorable Minister. To briefly introduce the Minister, he is the Cabinet Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. He is the member of Bharatiya Janata Party and has been associated with the Uttar Pradesh politics for a very long time. He comes from a family in the village of Malikpur in the district of Ghazipur in UP. During his career, he has occupied many positions in the government. Apart from being the party chief, he held the portfolios of public works, medical, education, and tourism. Mr. Mishra was elected as an MLA many times and was also appointed as Rajya Sabha member. During his tenure, he formulated the road development policy in UP, under which many link roads to connect villages were constructed. He was elected as the member of Rajya Sabha thrice in 1980, 1986, and 2001. Mr. Mishra has won the general elections 2014 from Devariya constituency and thereafter was appointed as the cabinet minister in the present government. I would request President IEEMA, Mr. Vishnu Agarwal, to kindly welcome the minister. माननीय कलराज जी, आपका ईमा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ईमा के जितने मेंबरान, जितने सदस्य यहाँ पर हैं और वो अनुग्रहित हैं कि आप आज हमारे अधिवेशन में आए और हमको गौरवान्वित किया। उसका कारण है कि 80% हमारे सदस्य जो हैं वो आपकी मिनिस्ट्री के तहत काम करते हैं, वो माइक्रो या एसएमई सेक्टर के हैं। ये सच है कि हमारी एसोसिएशन में सार्वजनिक उपक्रम BHEL भी मेंबर है। जो यहाँ बड़े MNC हैं, देश में काम कर रहे हैं, वो सभी हमारे मेंबर हैं। पर जो बल्क ऑफ द स्ट्रेंथ है, जो अधिकांश हमारे मेंबरान हैं, वो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों से आते हैं। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ भी कहना कि आज क्या स्थिति है लघु और मध्यम उद्योग की, वो दीपक एक सूर्य को किरण दिखाए उसके समान होगा। परंतु फिर भी मैं बिजली से संबंधित हमारे सेक्टर में जो उद्योग है, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। और जो छोटे उद्योग हैं, उनकी समस्याएं आपसे ज़्यादा और कौन जानता है। पर मैं केवल एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर उस समस्या का कुछ समाधान निकल आए तो हमारे उद्योग जितने हैं, कम से कम बिजली के क्षेत्र में, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, हमारे सेक्टर में अधिकांश जो हम माल बेचते हैं वो या तो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या सरकारी ट्रांसमिशन कंपनीज को हम माल बेचते हैं। जो छोटे उद्योग हैं वो इन सरकारी यूटिलिटीज़ को भी माल बेचते हैं, कुछ डायरेक्टली माल बेचते हैं और कुछ
जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं हमारे सेक्टर में, उनको माल बेचते हैं। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, और मैं ईमा के एक अध्यक्ष की हैसियत से ये कह रहा हूँ, पर बहुत सोच समझ के, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वक्तव्य दे रहा हूँ कि मेरे जो अपनी एसोसिएशन के जो बड़े मेंबर हैं, वो भी छोटे उद्योगों को पैसा देने में उतनी ही देरी करते हैं जितना कि सरकारी उपक्रम के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अधिकांश रूप से। जनरल स्टेटमेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सेप्शन, बट बाय एंड लार्ज आज मंत्री जी जो आज सबसे बड़ी समस्या है कि 6 महीने तक ना बिजली बोर्डों से, यूटिलिटी से सप्लायर्स को पैसा मिल रहा है, और यही स्थिति हमारे छोटे उद्योगों की उनसे है जो कि बड़ी कंपनियों के को माल सप्लाई कर रहे हैं। सर, बहुत पहले से, और मैं उस मूवमेंट से जुड़ा था, एक एक्ट आया, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट एक्ट। आपकी मिनिस्ट्री ने पहले उस पर बहुत काम किया, बहुत वर्ष से था। कुछ उसमें कमियां पाई गई, और कमियां पाने के बाद सरकार ने फिर उसमें संशोधन किया, पर उसमें सॉल्यूशन नहीं निकला। और सॉल्यूशन कारण बड़ा सिंपल है कि सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला। उसमें प्राविधान ये है कि अगर आपका पैसा किसी ने नहीं दिया तो आप कचहरी जा सकते हैं। अब कचहरी को छोड़ के उन्होंने एक फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी। जब तक चाहे कचहरी हो, चाहे फैसिलिटेशन काउंसिल हो, जब तक उनका निर्णय तेजी से नहीं आएगा, तब तक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पुरानी कहावत है, और वो इस केस में हूबहू अप्लाई करती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और वो दूसरी समस्या, मान लीजिए मैं एक छोटा उद्यमी हूं और ये मेरे बड़े उद्यम के हैं जिनको मैं माल सप्लाई करता हूं, मैं इनके खिलाफ कोर्ट कचहरी करके या उसमें फैसिलिटेशन काउंसिल में अपना केस दाखिल करता हूं कि उन्होंने नहीं दिया और मुझे ब्याज दें दुगने पे। इन्होंने कहा भैया ब्याज का तो फैसला होता रहेगा, जो फैसिलिटेशन काउंसिल करेगी वो देख लेंगे, पर ऐसा है कि कल से तुमसे माल लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं वहाँ पे ये चाहते कि झगड़े वालों से माल लें। आप बताइए कि क्या वो पनप पाएगा, क्या वो जी पाएगा? कुछ ऐसे इन समस्याओं का आसान हल नहीं है, और क्योंकि आसान हल नहीं है इसीलिए आपके सामने रख रहे हैं। आसान काम करने वाले तो बहुत लोग हैं जो कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन दे देते हैं। केवल मुश्किल कामों के लिए हमें आपके पास आना पड़ता है, या आपके पास आएंगे। मंत्री जी, मेरा ऐसा सोचना है, और मेरे जो भाई लोग ईमा के मेंबर्स हैं और लघु और मध्यम उद्योग से हैं, वो अभी भी बताएं, यहाँ ओपन फोरम में बताएं कि मेरा सोचना ये सही है कि नहीं, कि अगर उन्हें अपने माल का दिया हुआ पैसा समय से मिल जाए तो उनकी एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, हम लोग बात करते हैं कि बैंक सपोर्ट नहीं करते। अरे बैंक आपको सब्सिडी थोड़ी दे रहा है, बैंक तो केवल उधार दे रहा है। अगर मुझे अपना पैसा मिल जाए जो मैंने माल सप्लाई किया है सही समय से, तो मुझे बैंक से उधार लेने क्यों जाना है? बैंक भी 14% ब्याज लेता है, 6 महीने का 7%, और 6 महीने में नहीं मिला तो सब प्रॉफिट तो उसमें चला गया, तो वो कहाँ से बेचारा बनाएगा, कहाँ से रोटी खाएगा? मेरा केवल एक, आप आज हमारी संस्था में आए हैं, आप जो भी अपने वक्तव्य देंगे, जो भी अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करेंगे, हमारे सदस्यों के लिए वो सरमाथे है। उनको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा आपसे, और आगे से हमारे सदस्य जो छोटे और मध्यम वर्ग के सदस्य हैं, उनकी जो समस्याएं होंगी, आपके यहाँ आने से हम लोगों की सबकी हौसला अफजाई हुई है। हम हिम्मत करके आपके पास वो समस्या लेके आ पाएंगे, और हम केवल समस्या नहीं लेके आएंगे, हम समस्या के साथ साथ कुछ जो हमारी समझ में उसका सलूशन हो सकता है वो सलूशन लेके आएंगे। और यदि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हम कंधे से कंधा मिला के आपकी मिनिस्ट्री से के साथ काम करके जो हम अपना सलूशन दे रहे हैं उसे ज़मीनी हकीकत पर कार्यान्वित करके आपको रिजल्ट दिखाना चाहेंगे। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि हम उसको वहाँ पे सक्सेस कर देंगे,
या वो 100% हमारा सोल्यूशन सक्सेस होगा, पर इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि जो होगा वह सच्चे तरीके से हम उसकी मेहनत करेंगे, सोच लगाएंगे और सच्चे तरीके से आपकी मिनिस्ट्री के साथ काम करना चाहेंगे। आपके आशीर्वाद के हम सब आकांक्षा रखते हैं। मित्रों, मेरा कलराज जी से एक बड़ा विशेष रिश्ता है और मैं वो बताना चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से। कलराज जी पहले लखनऊ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए का चुनाव जीते थे 2012 में, और मैं वहाँ का वोटर हूँ, तो मैं तो ये अपना हक समझता हूँ। यहाँ पर खड़े होकर ईमा के अध्यक्ष की हैसियत से बोलने में मैं अपना हक समझता हूँ कि मैं उनसे कुछ आग्रह कर सकता हूँ, उनसे कुछ मांगने का हकदार हूँ, और एक वोटर के नाते तो मुझे पूरा हक मौजूद है। तो मैं तो उनका पुराना वोटर हूँ, और कलराज जी का मुझे लखनऊ से मालूम है, जो भी इनके करीब आते हैं बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार रहता है। कोई कलराज जी के साथ रह के ऐसा नहीं महसूस करता कि ये भारत सरकार के मंत्री हैं, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। सबको कलराज जी ऐसे व्यवहार करते हैं कि या तो उनके छोटे भाई हैं या उनके बड़े भाई हैं, और यही उनकी खासियत है। और इसी कारण से कलराज जी प्रचारक थे आरएसएस के एक ज़माने में, बहुत पहले, और आज भारत सरकार में एक बड़ा जिम्मेदाराना वाला, एक बड़ा मुश्किल, एक समस्या वाला मिनिस्ट्री उनको दी गई है, और आप उसमें सक्सेसफुल हों, आप कुछ करके दिखाएं। हम लोग तो आपके साथ हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, क्योंकि यही एक सेक्टर है, सब लोग बात यही करते हैं, ये एक सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। बड़े उद्योगों से नहीं होना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किसान और ट्रेडिंग और सर्विसेज में कितना एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, और ये आपके हाथों द्वारा हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भाई साहब आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे मित्रों का संबोधन करें। चीज समझें, जैसे आपने कुछ समस्याएं सामने रखी हैं, अगर किसी को कोई बात कहनी हो, हमारे सामने लानी हो, तो मैं समझता हूँ कुछ समय ले सकते हैं, उसके बाद बोलना चाहिए। अगर आप उचित समझें, आपके कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, तो उसको आप देख लें, फिर The floor is open. Anyone having any suggestion? One to one you can have, put up your question to the Honorable Minister. But the question should be limited to the specific role of SME sector. That's my humble request. And it should be something which is relating to problems on the ground. Academic discussion we can have with the Honorable Minister even later on. So my name is Harshvardhan Parekh. I am from Hardcam Electronics Group, and I am also doing some work with the SME with IEEMA. So my question to you is, when the country is having more than 70% of SMEs, today we are in an area where we have a lot of aspirations through the government. What significantly you can suggest in these last 2 years about aspirations that have turned into reality with respect to the electrical sector? So this is my specific question, again related to the MSME. In the last 2 years, we have a lot of aspirations coming in. We have been attending seminars, we have been seeing Make in India, we have been seeing a lot of things. Now turning these aspirations to reality with specifics to the small scale industry, could you cite some examples for a confidence level building? Thank you, sir. Agar anyone else who has a question, because the Honorable Minister would like to take all the questions and thereafter reply it in his address to the audience. नमस्कार साहब, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन परब, और मैं काफ़ी एमएसएमईज के साथ घुल मिल चुका हूँ। एक बड़ी समस्या है कि जब एमएसएमई एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है और वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन जब वो आर&डी में जाना चाहता है तो आर&डी के वक्त उसको वो जो ज़मीन या उसको जो बिल्डिंग बनानी पड़ती है वो कमर्शियल रेट में मिलती है,
नंबर 1। नंबर 2, जब वो एक्सपैंड करना चाहता है तो वो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलता है उसको उसी वक्त, तो उसकी जो आकांक्षाएं हैं कि वो बढ़ाए और कारोबार आगे तक ले, वो स्किलिंग के वजह से और R&D और इनोवेशन के वजह से बढ़ता नहीं है। तो आपके राय से कैसा ये सोल्यूशन मिले कि ये एमएसएमईज उभरता जाए? नमस्कार सर, मेरा नाम है अजय सांगी। आई एम फ्रॉम श्री कृष्ण ऊर्जा जयपुर। हम एक स्मॉल स्केल ट्रांसफार्मर यूनिट है और हम डिस्कॉम्स में, राजस्थान में, अन्य स्टेट्स में सप्लाई करते हैं। राजस्थान में काफ़ी सारे मेरे जैसे मैन्युफैक्चरर्स को पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, तो हमने फैसिलिटेशन काउंसिल में हमारा केस लगाया, 2013 में लगाया था और 2014 नवंबर में एक डेट हमको पहली डेट मिली जिसमें काफ़ी सारे लोग आए थे। तो वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ कमिश्नर थे, जो कि मैं मानता हूँ बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, बहुत ईमानदार आदमी है, उन्होंने सबको एक साथ बुला के हमको ये राय दी कि हम डिस्कॉम के पास चले जाएं और डिस्कॉम को ये राय दी कि वो 1 महीने में निर्णय दें। वो अभी तक कोई निर्णय डिस्कॉम से मिला नहीं है और हम सब काफ़ी परेशान है इस मामले में, क्योंकि जो एक्ट के तहत इनको डिसीजन 90 दिन में देना चाहिए। तो अब हमने उनसे पूछा कि सर हम क्या करें, हम नेशनल लेवल पे जाएं कि आगे जाएं, तो उन्होंने कहा आपकी मर्ज़ी है, लेकिन देखिए हमने तो उनको दे दिया डिस्कॉम को। Namaste ji. My name is Soeb Fatehi. I am the president of the Control Panel and Switchgear Manufacturers Association. My question is generic to SMEs, not only to my product. 2 questions. One is that there are 19 acts, either of state or central government, for employment laws. And in many of the cases, the provisions of some of these acts are contradictory to provisions of other acts like the Service Tax Act or the Contract Act. So these anomalies of contradictory provisions in different laws and the number of laws to be complied with, it is impossible. I am not saying it is difficult, I say it is impossible for a small and medium sector company to be compliant with all the laws. So by creating a situation where non-compliance becomes the order of the day, you are damaging the SME, you are damaging the culture of the industry, 1. Second question, sir. Public sector tendering processes. After a sealed tender is invited and a 2-part sealed tender is invited where there is a technical bid and a commercial bid separately, then what is the necessity, and is it a healthy business practice to then force a reverse auction after that? When you have got a sealed tender, a technical bid followed by a sealed tender price bid, then why the reverse auction? मैं थोड़ा सा इंटरवीन Yes, sir. करूंगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, Yes, sir. IEEMA is seized of it. Yes, IEEMA is working on it. Thank you, sir. I will request you to get in touch with our secretariat Thank you, and sir. give your inputs, Thank and you, sir. IEEMA will take it further. Thank you, sir. और मंत्री जी तो इसको एड्रेस करेंगे। इंदिरा जी, इट विल बी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप राइटिंग में दे दीजिए IEEMA को, IEEMA मंत्री जी से चर्चा करके आपको देंगे। इंदिरा जी। Sir, this is on behalf of a member who asked this question earlier. He says it takes a very long process for MSMEs to register in the public sector unit. So that process should be speeded up, sir. Thank you very much. मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपना संबोधन हमको करें। आज के इस IEEMA से संबंधित उद्यमियों के सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय
विष्णु अग्रवाल जी, जो आज से अध्यक्ष हो गए हैं, आज ही से हुए हैं ना अध्यक्ष आप? फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम टुडे? हाँ, मैं जानता हूँ। श्री बाबू बैल जी, श्री सुनील मिश्र जी, सभी पूर्व अध्यक्षगण, हमारे भारत सरकार में आए हुए सचिव बंधुगण, अधिकारीगण, और यहाँ सभी उद्यमी बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आपके बीच में आकर अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया और अपनी उपलब्धियों के बारे में भी आपने वर्णन किया है, और साथ ही साथ आपको कार्य करते समय क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, इसका उल्लेख श्रीमान विष्णु जी ने किया था। मैंने उचित समझा कि आप लोगों को भी जो परेशानी या कठिनाई प्रक्रिया संबंधित, प्रोसीजर संबंधित हो रही है, उसको रखें तो मेरा खुद का ज्ञानवर्धन होगा, और उस संबंध में जो हमारी तरफ से किया जा रहा है वो करने का हम आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। ईमा में ज़्यादातर, जैसे मुझे बताया गया कि 70% या मैं कह सकता हूं कि लगभग 90% एसएमई से संबंधित है, लेकिन एमएसएमई से नहीं है, माइक्रो से नहीं है। माइक्रो शायद इसमें नहीं के बराबर होंगे, कि है कोई? हाँ, एक है, कुछ हो सकते हैं। और इसलिए एसएमई से संबंधित ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज ऊर्जा विकास का आधार स्तंभ है। ऊर्जा नहीं रहेगी तो विकास नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए ऊर्जा से संबंधित, चाहे एनर्जी के बारे में नए प्रकार का कॉन्सेप्ट के आधार पर नीतियों को बनाने वाले लोग होंगे, चाहे किस ढंग से उसका सर्वाधिक जनरेशन हो सके, उत्पादन हो सके, उस संबंध में चिंतन करने वाले होंगे, और साथ ही साथ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों में कौन से सामान इस तरीके से लगाए जाएं जिसके कारण अधिकाधिक लोगों को हम उस ऊर्जा से लाभान्वित कर सकें, और वो भी सामान कितना गुणवत्ता युक्त हो, आइडियल हो, जिसके आधार पर कई बार कहते हैं ना कि वो लीकेज हो गया, वायर टूट गया तो चला गया, कई प्रकार की बातें आती हैं। उस स्थिति का निर्माण ना हो, वो एक आइडियल सिचुएशन बने। और अगर आइडियल सिचुएशन बनेगी तभी आज के भारत के प्रधानमंत्री ने आपके ऊपर विश्वास करके जो दुनिया के सामने कहा है, हिंदुस्तान में तो कहा है लेकिन दुनिया के सामने कहा है कि आने वाले काल में हम हिंदुस्तान में 24 घंटे बिजली लोगों को उपलब्ध कराएंगे। एक और ग्रामीण क्षेत्र या सुदूर क्षेत्र नहीं, बिजली उपलब्ध कराने का तात्पर्य कि विद्युत की कमी नहीं होगी, चाहे इंडस्ट्री का सेक्टर होगा, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर होगा, चाहे कोई भी सेक्टर होगा।
एनर्जी पर्याप्त होगी, यह आपके ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की उद्घोषणा की है। क्योंकि अपने चाहे शासकीय स्तर पर ऊर्जा के संबंध में एक विजन रखते हुए पॉलिसी मेकर होंगे, ऊर्जा कैसे पैदा होगी, कोयला से पैदा होगी, पानी से पैदा होगी, सोलर से पैदा होगी, विंड से पैदा होगी, समुद्र से पैदा होगी, कूड़ा करकट से पैदा होगी, कैसे पैदा होगी और किस ढंग से पैदा होगी, ये पॉलिसी मेकर इसके बारे में विचार करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे। और अगर वो पैदा होती है तो क्या हमारे इक्विपमेंट्स इतने पर्याप्त हैं, इतने सक्षम हैं कि हमारे पैदा हुई ऊर्जा को ढंग से संभाल सके? जैसे मुझे लोगों ने बताया कि सोलर एनर्जी के बारे में इसमें बहुत चर्चा चल रही है, लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में गहन अध्ययन करने वाले कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि अगर लगातार सोलर एनर्जी के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो उसका कभी कभी ऐसा आफ्टर इफेक्ट हो सकता है जो पूरे इलाके के लिए बड़ा खतरनाक हो जाए, विस्फोटक हो जाए। और उन्होंने पूरा मुझे एनालिसिस करके बताया। अगर उसका उत्पादन करना है तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट होने वाले हैं या कुछ निगेटिविटी आने वाली है तो उसका समाधान कैसे निकाला जाए, और इसी प्रकार के सारे विषयों के बारे में हो सकता है। और इन सारे चीजों का समाधान, सारे चीजों को लोगों के सामने व्यवस्थित तौर पर प्रस्तुत करने वाला जो वर्ग है वो आप हैं। आपके द्वारा निर्मित किया हुआ माल है, आपके द्वारा उत्पादित किया हुआ, मैन्युफैक्चर किया हुआ वो सामान है, उसके माध्यम से सारी चीज दिखाई पड़ेगी। हमने तो काल्पनिक आधार पर नीति बनाकर उसके प्रवाह को आगे बढ़ाने की दिशा में इनोवेशन के द्वारा और R&D के द्वारा, जिसकी अभी कुछ लोगों ने कर्म की है, इसके द्वारा हमने इस चीज की, हमारे पुजारी साहब बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें निर्माण करते होंगे, लेकिन उसको शेप देने में, उसको उपयोगी बनाने में, उसको सब दूर पहुंचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे ये आप करेंगे। आपका सामान करेगा, आपकी इंडस्ट्री कैसी है, आपका रॉ मटेरियल कैसा है, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है, और टेक्नोलॉजी गुणवत्ता युक्त है कि नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, दुनिया के अंदर कंपटीशन में आने वाली जो आधुनिक तब तकनीकी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमने उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया कि नहीं? हम क्यों चीन और बाहर का उदाहरण लें, हम अपना उदाहरण क्यों न पेश करें? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे यहां भी वैज्ञानिक हैं, हमारे यहां भी वो उस प्रकार के चिंतनकर्ता हैं जो नए नए इनोवेशन के द्वारा, नए नए आविष्कार के द्वारा, R&D के हिसाब से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से नई चीजों को देकर नई टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग। हमारे उस इंडस्ट्री में है क्या? उस प्रकार का नो हाउ है क्या? उसमें हमारा स्किल्ड लेबर है कि नहीं है? हम किसी को भी भर्ती कर लिए। अभी हमारे एक मित्र ने कहा हमारे लिए R&D के लिए जमीन नहीं मिल रही है, कमर्शियल रेट पर मिल रही है। इनोवेशन किसकी कैसे हो पाएगी? और कोई बात आती है तो स्किल की बात खड़ी हो जाती है। मेरा कह रहा है R&D तो रखना पड़ेगा, आपको करना चाहिए।
R&D और इनोवेशन का नहीं है तो आप नई इंडस्ट्री आगे चला सकते। ये मैं न तो इंडस्ट्री से रहा हूं न मैं उसका कोई बहुत जानकार हूं, लेकिन आप जैसे लोगों से संपर्क और संबंध होने के कारण ही मैं बड़ा विश्वास साथ इतना कह सकता हूं कि जिस इंडस्ट्री के अंदर R&D और इनोवेशन से संबंधित कोई अलग सेल नहीं बना होगा वो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा मेरी दृढ़ मान्यता है। आगे नई चीज नहीं कर सकती है, भले ही छोटे स्तर पर करे, भले ही छोटे स्तर पर करे। R&D एंड इनोवेशन टुडे इट इज मस्ट, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप करें, और इसलिए उसको लेकर के चलिए आप। जहां तक रेट का सवाल है सरकारी स्तर पर है वो ठीक है, ये इंडस्ट्री स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट की औद्योगिक उसके औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट उसको बोलते हैं, प्लॉटिंग है, वो किस रेट में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये हमारे सामने समस्या है। और हमने कई जगह के मुख्यमंत्री से कहा है कि जो ये इंडस्ट्रियल स्टेट की आपकी प्लॉटिंग है वो उद्यमियों को नहीं मिल रही है, मिल रही है तो महंगे दर पर मिल रही है, वो कैसे उद्योग लगा पाएगा। कुछ उन्होंने कहा ठीक है इसको कर रहे हैं, बाकी लोग कैसे करेंगे। हमारी कोशिश है कि केंद्र और राज्य दोनों का सहयोगात्मक स्वरूप बनते हुए हम उद्यमियों को कितना प्रोत्साहित कर सके, यह हमारी कोशिश है। मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि 13-14 कानून ऐसे हैं, बल्कि ज्यादा ही, आपने 13-14 बताया, 14 बताया या 16 बताया, ज्यादा है, जिससे कारण बड़ी परेशानी जाती है। और एनोमलीज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, आपने बहुत ठीक कहा, कंट्रडिक्टरी स्वरूप भी है उसका। अब जैसे हम एमएसएमई परिभाषित करते हैं, 2006 का हमारा कानून है, 2006 के कानून के आधार पर हम कहते हैं कि हमारा जो डिफिनीशन हमने तय की है एक कैपिटल ओरिएंटेड है। कई देशों का आपने देखा होगा, यूरोप के देशों में लेबर ओरिएंटेड है, और आप 400-500 करोड़ के टर्नओवर वाले होंगे, 1000 करोड़ के टर्नओवर वाले होंगे तो भी एसएमई कहला रहे हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं है, कई जगह कैपिटल एंड लेबर दोनों ओरिएंटेड हैं, हमारे यहां कैपिटल ओरिएंटेड है। अब कैपिटल ओरिएंटेड है तो 25 लाख माइक्रो, 5 करोड़ स्मॉल और 10 करोड़ मीडियम, उसकी लिमिट है। इस हिसाब से होगा तो एसएमई कहलाया जाएगा, तो एक लिमिट है। अब इसके अंदर अब लेबर उसमें जाइए तो इंडस्ट्री को लेबर के हिसाब से मानते हैं कि इतना लेबर है, इस लेबर के हिसाब से आपकी इंडस्ट्री का हम मानक करेंगे। उस कानून के कारण इंडस्ट्री प्रताड़ित होती है, उसके कारण इंडस्ट्री की परेशानी बढ़ जाती है। कंपनी लॉ है, उसके कारण इंडस्ट्री की परेशानी बढ़ जाती है। बैंक से आप लोन जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते, सोचते हैं जरा और लोगों से हम लेने पैसे ले लें, कंपनी लॉ आपको परेशान करता है, आप नहीं ले पाते। दिक्कतें और कठिनाइयां बहुत है, और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने प्रारंभ में ही कहा, उन्होंने श्रमेव जयते का लॉन्च किया था, और उन्होंने कहा कि लेबर के 16 लॉज, 16 कानून हम एक स्थान पर रखेंगे, उसको एक करेगा और कई कानून को हम हटाएंगे, जिसके कारण इंडस्ट्रीज परेशान ना हो। और इसलिए उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर राज होता है, इंस्पेक्टर राज से लोग बहुत परेशान होते हैं, इंस्पेक्टर राज है, इसको हम समाप्त करेंगे। और कहा कि हम इंडस्ट्री कंप्यूटराइज है, उसमें कितनी इंडस्ट्री, कितने लेबर, कितने इंस्पेक्टर्स, कितने अधिकारी, ये हमारे पास है। हम सुनिश्चित करेंगे 24 घंटे पहले कि इस इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करने के लिए यह इंस्पेक्टर जाएगा।
और जाकर उसका निरीक्षण करेगा और वो आकर 75 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद फिर उस इंडस्ट्री में वो इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, भेजना होगा तो किसी और को भेजा जाएगा। तो निरीक्षण भी व्यवस्थित तौर पर होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन भी ढंग से होगा और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल जटिलताएं, डिफिकल्टीज कम हो, इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बहन जी ने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन में बड़ी परेशानी जाती है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए पता नहीं कहां कहां भागना दौड़ना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन ना हो सकने के कारण बड़ी दिक्कत जाती है, ये कठिनाई है। और इसलिए हमने पहला जो सवाल पूछा गया कि आपने क्या किया 2 साल के अंदर, मैं बताने जा रहा हूं क्या किया। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमने इसको ऑनलाइन कर दिया है, EM1 और EM2। आपने प्रोजेक्ट लगाने की कल्पना की कि हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास DIC के पास भागना नहीं पड़ेगा। हमने इसको ऑनलाइन किया है, इसका फॉर्मेट बनाया है, 20 पॉइंट्स फॉर्मेट। आप ऑनलाइन क्लिक करिए, 20 उसमें चीजें उसको भर कर दे दीजिए और सर्टिफिकेशन के लिए आपको DIC के पास नहीं जाना पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन है, सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब इससे जल्दी और क्या हो सकता है। ये किया है, आपको जानकर खुशी होगी। 16 राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया और करना शुरू कर दिया है। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हमने बहुत क्षिप्र गति से, तेज गति से ठीक करने का प्रयास किया है और उसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए DIC को लेकर जाएंगे, लेकिन DIC रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं करेगा। अगर नहीं है तो उसको ठीक करवाने का प्रयास करेगा। एक ने कहा कि साहब पेमेंट नहीं हो रहा है, फैसिलिटेशन सेंटर ढंग से निर्णय नहीं दे रहे हैं। ये बात सही है। नो डिले पेमेंट की बात आई, वो पॉलिसी थी, उसके लिए हमने कही किया कि ठीक है फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनके द्वारा फैसला होगा, लेकिन ये बात सही है कि उसमें विलंब हो रहा है। ये हमारे पास कई जन शिकायतें आई। विलंब को दूर करने के लिए हमारी तरफ से प्रयास हो रहा है, ये हमारे संज्ञान में है और इसको जल्दी ही, क्योंकि कई इसमें मंत्रालय सम्मिलित है, उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात इसको कितना अधिक सरल किया जा सकता है, इसको हम करेंगे। और आपको जो इतना विलंब हो रहा है न्याय प्राप्त करने में, जस्टिस डिलेड वाली स्थिति नहीं खड़ी होगी। जो अग्रवाल साहब ने पहले कहा, और फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से उनका ही मानक हम सुनिश्चित करेंगे कि इतने दिनों के अंदर निश्चित रूप से इसका फैसला होना चाहिए। हमारे श्रीमान अग्रवाल साहब ने भी और एक सज्जन ने और कहा कि जो टेंडरिंग की प्रक्रिया है, जिसको आपने रोक दिया था कि मत बोलो, जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसके कारण एसएमई को कठिनाई जाती है। PCUs को खरीदने की बात की गई, लार्ज इंडस्ट्रीज को लें और लार्ज इंडस्ट्री ले रही हैं तो टेंडर का वही प्रोसेस जैसे बाकी के लोगों के लिए लागू है। भैया कितना तुम्हारा टर्नओवर है, कब से तुम बना रहे हो, आदि आदि जो उसके सारे प्रोसेस है, अर्नेस्ट मनी का इतना है कि नहीं है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, 20%
कम से कम 20% प्रोक्योरमेंट पीसीयूज एमएसएमई से करेंगी। आपकी जानकारी के मैं कहना चाहता हूं कि सन 12 में एक कानून बना था, बाद में लगातार इसको परसू किया गया। साल भर के अंदर, भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, साल भर के अंदर जो 14 के पहले जो प्रोक्योरमेंट की स्थिति थी उसका दुगना साल भर के अंदर बढ़ा है, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और 1 अप्रैल 2015 से इसको मैंडेटरी कर दिया है कि खरीदना ही है। और डिफेंस ने कहा है कि इसको हम ज्यादा खरीदेंगे, और उन्होंने कहा है कि हम 30% से ज्यादा खरीदेंगे। हमारे स्वयं मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम 30%, 35% यहां से हम खरीदेंगे। लगातार प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत बढ़ोतरी होती जा रही है। और टेंडर की जो प्रक्रिया है, अर्नेस्ट मनी, नो अर्नेस्ट मनी, L1 प्लस 15%, ये किया है। टेंडर हमने आसान किया है। शिकायतें आई हैं कि कई जगह नहीं लोग मान रहे हैं, इसलिए हमने कमेटी गठित की है। कमेटी उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, और मॉनिटरिंग करके जो भी इस दिशा में गड़बड़ कर रहे हैं उनको हम जो भी मर्यादा के अंतर्गत दांडिक कार्रवाई है उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि ऐसे भी हमारे लोग परेशान ना हो। ये प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का हमारी तरफ से ये प्रयास चल रहा है। हमने कहा कि यूनिट एनपीए हो जाती है, बैंक लोन नहीं देता, बैंक लोन देता है तो स्मॉल स्केल वाला बेचारा दौड़ता भागता है, परेशान होता है, और जब नहीं जमा कर पाता कुछ तो 3 महीने के अंदर बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है। ये बैंक के अधिकार में घोषित कर देता है। हमने इसको ठीक किया है, अभी एक प्रोसेस बनाया है, और हमने किया है कि हमने एक नोटिफिकेशन जारी की है, शायद आपने पढ़ा होगा समाचार पत्र में, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं। रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, और उसमें नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें कहा है कि अगर किसी को एहसास हो रहा है कि एनपीए होने वाला है तो बैंक को सूचित करेगा कि भाई मुझे लगता है हम एनपीए हो जाएंगे, विचार करिए। रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में विचार कर सकते हैं या और भी विचार कर सकते हैं। बैंक इसके लिए एक कमेटी बनाएगा। कमेटी में बैंक का भी व्यक्ति होगा, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ये हमारे राव साहब ने क्या किया है मुझे पता नहीं, शिवाजी राव जी बैठे हुए हैं यहाँ सिडबी के सीएमडी, और फिर वो उसका नाम है करेक्टिव एक्शन प्लान, और उसमें बकायदे विचार करेंगे। अब विचार करते हुए ये भी देखेंगे कि ये एनपीए हो रहा है, विलफुली हो रहा है या सही माने में एनपीए हो रहा है। अगर जानबूझ के बदमाशी कर रहा है तो उसके लिए उसके अनुसार कार्रवाई, और सही माने में एनपीए है तो उसको अवसर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो जो मर रहे हैं, जिनके लिए आपने कहा कि इतना इंटरेस्ट आ जाता है, इतना इंटरेस्ट आ जाता है, बेचारा मर जाता है। हमारी कोशिश है कि हम छोटे उद्यमी को मरने नहीं देंगे। हमारी कोशिश है कि छोटा उद्यमी जो इस समय परेशान हो रहा है उसको हर प्रकार की प्रोसीजरल डिफिकल्टीज से, जो प्रक्रियात्मक जटिलताएं हैं, उससे हम मुक्त करें। और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो घोषित किया कि लगभग 5 लाख यूनिट हमारी सीख हो गई हैं, पिछली बार 4 लाख की उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, ये भी एक्सप्लोर किया है कि कितनी यूनिट रिवाइव की जा सकती है और कितनी यूनिट एकदम मर जाएंगी जिसको रिवाइव ही नहीं किया है। बहुत धन्यवाद आपका।
ये भी किया है, हम उसको भी तलाश रहे और एग्जिट पॉलिसी हमने वेबसाइट पर भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं उसको। हमारी कोशिश है कि जिनके ऊपर देश का विकास निर्भर करता है, एमएसएमई देश के विकास के दिशा में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा चाहे सर्विस सेक्टर होगा, दोनों मिलाकर 37.5% का योगदान देती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगभग 50% का योगदान एमएसएमई का है और 6,000 से ज्यादा, 6-7 हजार के आसपास, इससे ज्यादा उनका निर्माण कार्य होता है, उत्पाद होता है। 8 करोड़ से रहने दो, नहीं गिरेगा, चिंता मत करो। 8 करोड़ से ज्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट का सृजन हुआ है। लेकिन बहन जी ने जो एक बात की थी कि रजिस्ट्रेशन में बड़ी देरी होती है, दुखद यही रहा है कि लगभग 4 करोड़ के आसपास इकाइयां हैं, लेकिन उसमें केवल 17 लाख इकाई रजिस्टर्ड हैं, ओनली 17 lakhs। ये दुखद है। हमने आप जैसे एसोसिएशन से आग्रह किया है कि आप अभियान चलाइए, जो इकाइयां रजिस्टर्ड नहीं है उनको हम रजिस्टर कराएंगे। जितनी यूनिट आपके साथ जुड़ी हुई हैं उन यूनिट का हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अभियान करके चलाया गया तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत जा रहा है माइक्रो, एसएमई तो नहीं लेकिन माइक्रो तो जा रहा है, वो कम से कम ऑर्गेनाइज तो हो जाए। ऑर्गेनाइज होगा तो सचमुच इसमें इतनी क्षमता है कि जिस क्षमता के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार होगी और सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर हम काम करेंगे। तो सबका साथ माने ये सब लोग जो इंडस्ट्री के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, विशेषकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, इन सब लोगों का साथ, इनसे जुड़े हुए लोगों का साथ और बाकी के लोगों का साथ अगर समुचित तौर पर बना रहा तो यही सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर के माध्यम से अगर आत्मविश्वास के साथ आप खड़े हो गए तो दुनिया में हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और विकसित देश के रूप में उभरेगा और मेक इन इंडिया को ही चरितार्थ करेगा। भारत के प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया का जो नारा है, इसके माध्यम से चरितार्थ होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब का नारा उन्होंने नारा नहीं दिया है, कमिटमेंट किया कि हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। कमिटमेंट का मतलब हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां हमारी इंडस्ट्री नहीं होगी। इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री नहीं, छोटी इंडस्ट्री। और इसलिए उनके निर्देश पर, उनके दिशा निर्देशन पर मैं, जो मित्र ने पहले कहा कि 1.25 साल के अंदर क्या किया, उसे मैं बता रहा हूं। 660 डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान में। आपको जानकर खुशी होगी 607 जिलों का मैंने इंडस्ट्रियल प्रोफाइल तैयार करवा लिया है। शायद इतना जल्दी कोई नहीं कर सकता था। जब चाहे आपके जिले, जिस जिले का चाहे वो हम आपको दे देंगे, जिस स्टेट का चाहेंगे हम आपको सीडी भेजवा सकते हैं। हमारे पास हमने खुद देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। 607 जिलों का हमने इंडस्ट्रियल प्रोफाइल तैयार करवाया है, 607 जिलों का स्किल मैपिंग तैयार की है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा तो मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया अर्थात अधिक से अधिक उद्योगों का विस्तार, मेक इन इंडिया अर्थात अधिक से अधिक उद्योगों का विस्तार, अर्थात अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट, अर्थात अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे उद्योगों के लिए। इस दिशा में काम शुरू हो गया है। और अगर अधिक से अधिक उद्यमी तैयार करना है, आपको अधिक से अधिक उद्योग चलाना है, तो आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए या ऐसे ही चाहिए? अगर स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो यहां का बना हुआ माल अगर बाहर जाएगा तो लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान का बना हुआ माल है, इसमें कोई दम नहीं है। जैसा कभी कभी होता है, बाहर से आते हैं लोग
तो सैंपल तो बहुत बढ़िया दिखाते हैं, लेकिन पैकेजिंग ऐसी करते हैं कि जब वहां जाता है तो लगता है अरे क्या भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर मेक इन इंडिया करनी है तो अच्छा हो, आइडियल हो, और उसके लिए उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया करनी पड़ेगी। और स्किल इंडिया करनी पड़ेगी तो स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम अधिक से अधिक करने पड़ेंगे, और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम अधिक से अधिक करने पड़ेंगे तो दोनों प्रकार के कार्यक्रम करने पड़ेंगे। छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी करने पड़ेंगे, बड़े उद्योगों के लिए भी करने पड़ेंगे, बड़े उद्योगों के पार्ट्स बनाने के लिए करने पड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल भर के अंदर इसके लिए हमने क्या किया। हमने छोटे उद्योगों के लिए, छोटे उद्यमी तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के नाम पर पूरे देश के अंदर इनक्यूबेशन सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल जिलों जिलों में हमने खोले हैं, जिसमें 3 लाख से लेकर 25 लाख तक की मशीनें, और जिसमें क्लास 10 से लेकर ITI, पॉलिटेक्निक, इस प्रकार के पढ़े हुए बच्चे वहां हैंड ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं, हैंड ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उनको उद्यमी भी बनाया जा रहा है। 4 लाख की मशीनें खरीदवाया जा रहा है, बैंक से कैसे कर्जा लेंगे वो भी सिखाया जा रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नट बोल्ट, हथौड़े, ये सब करने का क्या प्रक्रिया आई, मैं जल्दी करता हूं। मुझे अगर छूट हो तो मैं थोड़ा समय ले लूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? आप लोगों का जैसा आदेश हो वैसा मैं बोलूं। तो उसको वो भी ट्रेनिंग हम देंगे, और ट्रेनिंग देकर रिपेयरिंग का भी हम कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, 5 लाख लोगों को ट्रेंड किया है साल भर के अंदर इस पर। और प्राइवेट कंपनी से भी हमने एमओयू किया है, सैमसंग से हमने एमओयू किया है, और लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है कि आइए, और उन्होंने भी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। उन्होंने 10 जगह खोलने का फैसला किया और कहा कि साल भर के अंदर 10,000 लोगों को हम नौकरी देंगे। ये हमने किया है। स्किल्ड मैन पावर, मेक इन इंडिया करना है तो स्किल्ड मैन पावर तैयार करना पड़ेगा, और स्किल्ड मैन पावर जाएगा तो आपकी इंडस्ट्री ठीक चलेगी। नहीं तो आप ये लोग कहेंगे कि साहब हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, कहां से इंडस्ट्री चलाएं। और इसलिए स्किलिंग, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्किल इंडिया, और अधिक से अधिक उद्यमी तैयार हो। ITI का जमाना है, IT का जमाना है, और IT का जमाना है। नए नए लड़के तैयार हो रहे हैं, इनोवेटिव आइडिया उनके अंतर्गत आ रही है। हमने कहा कि स्टार्टअप इंडिया के रूप में हम स्थापित करेंगे, और उस नौजवान लड़के के दिमाग में इनोवेटिव आइडिया आ रही है कि हाँ ये चीज बनाई जाए, अच्छी चीज होगी, वो कहां से बनेगा। तो इसके लिए कैसे फंडिंग करना, आपने देखा होगा वेंचर कैपिटल फंड बजट के अंतर्गत आदरणीय श्री अरुण जेटली जी ने रखा था, हम उसका उपयोग इसमें कर रहे हैं, और हमने इसके लिए अपनी स्कीम चलाई है। ये स्कीम फॉर इनोवेशन ऑफ, एक स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड रूरल इंडस्ट्रीज, एस्पायर योजना है हमारी। और इस योजना के अंदर नई नई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, क्वायर इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास, विलेज इंडस्ट्रीज अधिक से अधिक बढ़े, और जो भी इनोवेटिव आइडिया से प्रेरित होकर आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे लोगों का अवसर उपलब्ध कराते हुए वो प्रोजेक्ट तैयार करके उसको आगे बढ़ाएं। ये सारी चीजें करना शुरू किया है, ताकि पूरे देश के अंदर मेक इन इंडिया को हम सफल कर सके। मेक इन इंडिया को सफल करना है तो स्किल इंडिया करनी पड़ेगी। स्किल इंडिया होगा तभी जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की स्थिति निर्माण होगी, तभी गुणवत्तायुक्त चीजों का निर्माण होगा। और इसके लिए हमारे विभाग से, हमारे मंत्रालय से जो हम जोर दे के कह रहे हैं, हमने कहा अगर जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, प्रदूषण मुक्त, गुणवत्ता युक्त
और चीजों का निर्माण करना है तो हमें क्वालिटी टेक्नोलॉजी को डेवलप करनी पड़ेगी। और क्वालिटी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम ये बनाया, उसके लिए भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। इसके लिए हमने लीन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसके लिए हमने डिजाइन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसके लिए हमने टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम सुनिश्चित किया है, जो टूल्स रूम के रूप में जाना जाता है। अभी हमने लाइवलीहुड ट्रेनिंग देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की बात बताई आपको, और टूल्स रूम जो बीए है, बीएससी है, बीटेक है, एमटेक है, एमबीए है, ऐसे लोगों का ट्रेनिंग। और टूल्स रूम 150-200 करोड़ रुपए का है। वर्ल्ड बैंक ने हमें सहयोग दिया है, पिछले बार 18 टूल्स रूम पूरे देश में बने थे, और साल भर के अंदर 15 टूल्स रूम का आइडेंटिफाई कर लिया है, और 2-3 जगह उसका शिलान्यास भी हो गया है। इस माध्यम से 1 लाख से ज्यादा टूल्स रूम के द्वारा हमने ट्रेंड करके लोगों को निकाला, जिसमें लगभग 100 इंटरप्रेन्योर बने, और बाकी के लोग जाकर अच्छे अच्छे उसमें काम कर रहे हैं। ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन के अनुरूप हम चल रहे हैं। गरीबों के प्रति जो उन्होंने चाहे जनधन खाता योजना के जरिए से आम आदमी को साथ में जोड़ने का प्रयास किया हो, शायद आपको इसका समझ में आ रहा होगा। आम आदमी जो समझता था कि हम बैंक में जा भी नहीं सकते, वह आदमी जाकर बैंक में खाता खोलकर स्वाभिमान और आत्मविश्वास का अनुभव किया था। दुनिया के इतिहास में, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहा हूं, बैंकिंग के क्षेत्र में इतना क्रांतिकारी स्वरूप कभी नहीं निर्माण हुआ था। कुछ महीने के अंदर ही 15 करोड़ परिवारों का खाता और 19,000 करोड़ का फाइनेंशियल इंक्लूजन सामान्य जनता से, गरीब जनता से हुआ। ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। ये पहली बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, उनके विजन के कारण, सबका साथ सबका विकास, इस प्रतिबद्धता के कारण हुआ है, जिसके कारण आज हम सब लोग आगे बढ़ सकेंगे। यह स्थिति निर्माण हुई। इन्हीं सारी चीजों के लिए मुद्रा बैंक की बात आई है। लोग कहते हैं मुद्रा बैंक है, छोटे इंडस्ट्रीज को होगा। यह मुद्रा बैंक जो बहुत गरीब है, खोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ट्रेडिंग करने वाले हैं, पटरी दुकानदार हैं, ऐसे लोगों के लिए मुद्रा बैंक है। और विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी, विदाउट गारंटी। ये बैठे हैं हमारे शिवाजी राव, पता नहीं ये क्या कर रहे होंगे, हम नहीं जानते, सिडबी के हैं सीएमडी। ये 50,000 बिना गारंटी के, बिना किसी रोज दो, पैसा अपना 1% इंटरेस्ट पर दो। इस प्रकार का अभियान, अभिनव अभियान शायद पहली बार लगा कि हिंदुस्तान की आम जनता, आम आदमी क्रमशः, मैं तो नहीं कह रहा हूं तुरंत महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत से लोग कहते हैं भैया क्या किया आपने, जैसे आपने सवाल पूछा था कि 100 साल के अंदर क्या किया आपने, लोग पूछते हैं क्या किया, कुछ हुआ तो नहीं, ये भी भाषा बोलते हैं। लेकिन एक एक करके आप देखिए, विषम परिस्थिति में इतना सारा कर ले जाना ये सामान्य घटना नहीं है। और इसलिए मित्रों, मैं कल इतना ही चाहूंगा कि हमारा जो निर्माण कार्य होगा, जिसके आधार पर पूरा देश अवलंबित है, विद्युत इक्विपमेंट के आधार पर हमारा विकास अवलंबित है। इसलिए जो हमने प्रारंभ में कहा कि हमारा लीन टेक्नोलॉजी, हमारा डिजाइन टेक्नोलॉजी, हमारा टेक्नोलॉजी क्वालिटी अपग्रेडेशन और हमारा टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम जो टूल्स रूम के हैं, इस आधार पर अगर हमने अपना निर्माण कार्य किया तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको सुनिश्चित मानक प्रदान करेगा और आपका एक स्टैंडर्ड बढ़िया बनेगा और जनरेशन में भी आप गुणवत्ता स्थापित करेंगे, ट्रांसमिशन में भी करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। और प्रधानमंत्री का जो विजन है, प्रधानमंत्री की जो सोच है, उस सोच के आधार पर पूरे देश के अंदर विद्युत का अभाव नहीं होने पाएगा।
इतना मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं। वो सारी चीजें आप लोगों के आपके ऊपर निर्भर करती है। और मैं एक बात और आप लोगों के बीच में विशेष रूप से कहता हूं, आप अपने इंडस्ट्री के प्रति डेडिकेटेड है। आप अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का स्रोत अपनाते हैं और चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का निर्माण इस ढंग से हो कि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं तो दुनिया के अंदर भी इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। यह जो सोच और डेडिकेशन है, यह आपकी इंडस्ट्री के प्रति नहीं है, यह देश के प्रति है। आपका इंडस्ट्री का बना हुआ माल अगर दुनिया के अंदर जाएगा और लोग कहेंगे ये रियली इट इज मेड इन इंडिया, तो आपका नाम तो होगा ही, पूरे देश का नाम होगा। तो आपका डेडिकेशन देश के प्रति है, केवल इंडस्ट्री के प्रति नहीं है। यह डेडिकेशन के भाव से काम करते हुए गुणवत्ता में हम किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। इस प्रकार की मन की स्थिति बनाकर अगर हम चलते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हम आगे बढ़ेंगे। बैंक के कारण बड़ी परेशानी आती है, मैं बैंक से जरूर, अगर बैंक के लोग होंगे तो मैं आग्रह करूंगा, अगर कोलेटरल फ्री अगर उनको लोन मिलना है तो मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। हमने साल भर के अंदर किया है कि जिसको कोलेटरल फ्री नहीं मिल पा रहा है, सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, बेचारे की हालत नहीं देने की, तो हमने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड एमएसएमई की तरफ से स्थापित किया है 95,000 करोड़ और 75% का हम कवरेज देते हैं। हम कहते हैं कि हम क्रेडिट लेंगे। रेटिंग होती है आपकी, रेटिंग के अंदर कहीं कहीं बड़ी परेशानी होती है, स्मॉल स्केल वाले परेशान होते हैं, रेटिंग एजेंसी बड़ी महंगी है। हमने कहा नहीं, हम सब्सिडी देंगे उसमें। और आपको जानकर खुशी होगी, रेटिंग एजेंसी को हम 75,000 रुपया देते हैं ताकि हमारी स्मॉल स्केल को रेटिंग एजेंसी के कारण कोई परेशानी न जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें व्यवस्थित तौर पर होती रहे ताकि किसी प्रकार की ऐसी स्थिति न निर्माण हो सके कि धन के अभाव के कारण वो परेशान हो जाए। बैंक से हमारा लगातार आग्रह रहा है, सिरबी से विशेष रूप से रहा है, क्योंकि सारे खर्चे सिरबी के माध्यम से होते हैं। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम ये हमारी है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी मान लो पुरानी हो गई तो उसके अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ का लोन, उसे 15% की हम सब्सिडी देते हैं। ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, ये इस हिसाब से करने का हमारा प्रयास है और इस बार हमने इस पर सर्वाधिक खर्च किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में आप सब लोग काम कर रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, गुणवत्ता युक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाली हो और पर्यावरण के प्रति उसकी अनुकूलता स्थापित करने वाली हो। और आगे चलकर ये ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी इक्विपमेंट्स बने हैं बड़े अच्छे हैं, आइडियल है, इस स्वरूप का निर्माण हो सके और उसके माध्यम से पूरे देश को हम ऊर्जा प्रदान कर सकें। देश को ऊर्जा प्रदान होगी, हिंदुस्तान महाशक्ति बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इतनी बात कहकर आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए मैंने कोशिश की है कि सबके प्रश्न का जवाब आ जाए। शायद आ भी गया होगा और नहीं आया होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now request Mr. Aditya Dhoot to... मेरे बारे में परिचय देते समय थोड़ी सी इन्होंने गलत कह दिया है, तो उसमें मैं सुधार देता हूँ। इन्होंने कहा है कि 86 और 80 में मैं राज्यसभा में आया, ऐसा कुछ चुना गया था। नहीं, राज्यसभा में मैं था 78 से लेकर 84 तक और फिर 2000 से लेकर 2012 तक। उसके पहले मैं विधान परिषद में था और बाद में 2012 में एमएलए का चुनाव लड़ा था और फिर इस समय मैं देवरिया से संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ा हूं और आपके बीच में मंत्री के रूप में खड़ा हूं। ये सुधार था, इसलिए कहा। माननीय मंत्री जी, क्षमा चाहता हूँ, गलती हुई होगी। मैं आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर आदित्य धूत, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्ट्रामा 2016, to kindly come on stage and invite the honorable minister to join us at Electrama in February of 2016 at Bangalore.
माननीय मंत्री जी, हम इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशन आपके उद्बोधन के ऊपर करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे और ईमा प्रेसिडेंट विष्णु अग्रवाल जी से अगर वो सामने स्टेज पे आ जाएं, जिससे कि बाकी जो वक्ता और पैनलिस्ट हैं वो यहाँ पर आसन ग्रहण कर सकें। मैं रिक्वेस्ट Mr. P.K. Pujari, Secretary, Ministry of Power, Government of India, to join us on the stage. I would also request Mr. P. Ravi Kumar, Additional Chief Secretary, Energy, Government of Karnataka, to join us on the stage. Dr. Chhatrapati Shivaji, Chairman and Managing Directors, SIDBI. Request you, sir. Mr. Yadwendra Mathur, Chairman and Managing Director, Export-Import Bank of India. And Mr. Avinash Bapat, Group CFO, ILNFS Energy Development Company Limited, to join us on the stage, please. Ladies and gentlemen, we are running a little late on this program. So keeping in mind the paucity of time, I would request Mr. P.K. Pujari, Secretary, Ministry of Power, for his address on emerging challenges and opportunities in the context of power reforms, to give his address, please. It's easy to speak from here. No, it's comfortable to speak from here. Thank you, Honorable Minister, and the participants in this convention, and my colleagues on the dais. Since we are running short of time, what I will do is I'll flag some of the issues and the reforms that we are contemplating or undertaking from the ministry. And also, I will not cover the whole spectrum of power sector, but will limit myself to the distribution sector, which I understand the large number of participants here have interest in. Today, the power sector is facing a very interesting challenge. It is sort of paradoxical situation today. We have installed capacity of about 278,000 megawatt. And if you look at the average PLF, or the capacity that is being operated, is less than 60%. This number has been coming down over last, say, 2 years. So we have capacity which we are not using fully. And at the same time, if you look at the consequence, there are about 18,000 villages which are not even electrified. There are close to 4 crores households which don't have access to electricity, and the per capita consumption is what it is, it's much lower than compared to many other countries. So today we have the capacity to
satisfy the aspirations of the citizens as a whole and the country as a whole. So what is required basically is to build up the capacity to deliver this and deliver the service and help realizing the aspirations. The bottleneck that we face is at the grassroots level, where the various distribution companies, the state utilities, they operate. Their capacity to purchase power, deliver in the cost-effective manner, because the objective is to deliver reliable, quality, and affordable power. So the basic aims of various things that or reforms that we are undertaking relates basically to this: how do we take actions which will ultimately translate to make the power being available reliably, which people can afford, and the quality power. We have done a number of, we have initiated a number of actions. I'll just broadly indicate that. I'll not deal to elaborate on that. Today morning we had discussion about the coal sector. What we are doing is that to reduce the cost of power, the rationalization of the coal linkage, that has been undertaken already, and the first phase that has been done, which has been completed, it straightaway saves to a tune about 1,000 crores of generation cost. What is basically done is that you rationalize the coal linkage in the sense that if the coal is here, is traveling and getting transported to some distance power plant, you start rationalizing the linkages so that the transportation cost comes down, number one. Coal Ministry has taken, has taken a lot of actions to ensure the quality of the coal and the grade specification. So that also will have impact on the cost of power. So these reforms basically help you in making the power more affordable. The idea is to reduce the cost of power. One of the issues that was flagged is that whatever the cost is, whether you compare it to international situation, whether this cost is high or not, I'm not getting to that debate, but our efforts should be to make that the generation cost comes down. That makes the utility more viable. We are also coming out or thinking about a policy where the coal linkage swapping can take place. There are power plants which are efficient, there are power plants which are inefficient. Can we switch the coal linkage from an inefficient power plant to give it to the more efficient power plant so that they generate the same generate power with the same coal with a low cost? We are thinking about that. It is under examination. We have discussed with the state government, will come out with a policy. So these are the issues which are, a lot of other issues are, reforms are there, but there are some of the issues we are thinking on and is being worked on. As far as transmission is concerned, there are issues. If there is a congestion in the southern grid, there is a need to address that. And the way we have planned the transmission system, there is a need to change it. We are looking at the GNA, General Network Access approach of the transmission system, where we can build the transmission system not on the basis of LTA that is being asked, but on the basis of the GNA. This is again being debated, and hopefully in the near future, we will come out with the policy so that the future transmission system is built on that basis. Coming to the distribution, where the crux of the problem is, the first point is that the financial health of the DISCOMs, we are concerned about it. This thing has been debated. At our ministry level, we have discussed with the chief ministers of the concerned states, along with the powers ministers and the secretaries. And shortly, Government of India will come out with a sort of policy package to address the financial issues of the DISCOMs. Since the matter is under consideration of the government, I will not like to elaborate that, but the decision has been taken to the highest level, and very shortly, a sort of, I will not call it a package, sort of policy formulations will be declared, which we hope the state will adopt, and then it will mitigate to a large extent the current financial situation that DISCOMs find themselves in. But apart from that, we are
trying to address some of the technical issues that is being faced by the DISCOM. The two major issues that DISCOMs face today is their AT&C losses, which is pretty high. Some of the states and some of the DISCOMs are doing fairly well. But on an average, if you look at the nation as a whole and some of the few states and their DISCOMs, it is pretty dismal in the sense that there is huge scope to improve their performance. Some of the utilities have, TNC losses as high as 30%, 35%, 40%. Obviously, in that scenario, either they will be financially viable and the quality of service will definitely be way below than what you expect. There are issues, managerial issues. Sometimes people say there is a political will, but I'll not deal with that. But there are a lot of technical solutions available. Both the schemes that the Government of India declared, the new government that introduced two schemes. One is that IPDS schemes, which was the urban area, and Deen Dayal Gram Jyoti Yojana, which is declared for the rural areas. Through both the schemes, we are trying to strengthen the distribution network. The emphasis on improving the distribution network, upgrading it, putting smart meters, making the information available on the real-time basis, utilizing the MIS to see that the performance improves, the technical losses are accounted for, the billing performance, and also the collection efficiency increases, because this is where the crux of the problem is. If this sector doesn't do well, the whole structure of the power sector gets affected, because that is where the service is delivered, that is where the cash is generated for the power sector. If DISCOMs earn money, they pay to the generator, they pay to the coal, they pay to the railways. So this is a sector which government is highly concerned about and getting into it and detailing. So few things that we did, I'll just run through it. We are trying to introduce smart meters. The specifications of the smart meter has been recently notified by the BIS. There is a policy we are saying that consumer having consumption beyond a particular point will enforce that they go in for the smart meters. Each grid, the transformers, we are insisting that they should be metered. There is, for both IPDS and the IPDS scheme, where a lot of this distribution upgradation takes place, a lot of equipments that you supply. There was an issue saying that the specifications sometimes that is being used by the various utilities vary. So if Government of India is giving subsidy or grant, not subsidy, grant, sharing the cost, the government also share the cost. What we insist is that there should be a minimum specification below which no utilities or DISCOMs will purchase. So we have formed a committee where I think members of IEEMA also are involved to specify, to fix the specification below which no equipments be purchased by any DISCOMs if it is part funded by IPDS or Deen Dayal Upadhyay. That's a major reforms that you are doing, because otherwise sometimes comes saying that the specification that is being followed by some of the DISCOMs are, saying that is different from what we normally would like to do. Also, a lot of emphasis has been given on the energy efficiencies. Recently, if you have heard saying that the LED schemes that has been launched by Government of India, like we distribute LED bulbs to the individual consumers, domestic consumers, also replacing the street light in the municipalities through LED. And now this scheme is basically self-financing in the sense that there no subsidy of government is involved. Both municipalities, they pay the money from they pay the cost of the LED street lights through the savings that they undertake. And just one example I'll give you. If you look at in Vizag, in Andhra Pradesh, the whole entire street light has been changed, and their savings per month runs to about 2.5 crores in energy, and they've been paying the whole cost through that savings only. So not only this helps not only the basically improving the energy efficiency, but also basically enable the DISCOMs to manage their load. So these are the few of the broad important points I wanted to flag. In the course of interactions, any detailing that you like to have or we can discuss,
I'll come back to you. Thank you so much. Good afternoon. Dr. Homi Bhabha, because we have a minister here, I thought I'll quote Homi Bhabha. He was addressing a set of parliamentarians many decades ago, and he had forecasted the power scenario. He was trying to push nuclear energy and had said, gentlemen, there is no power costly than no power. So he was addressing the political power and the electrical power. But we're glad, I mean, I'm, on behalf of the association, very excited that Government of India is showing so much interest in the sector, amongst other sectors. And the other thing that we as industry are very encouraged about is there is a partnership approach. We're not treated as somebody who's trying to cheat customers or cheat government. We're treated as a fair partner, and we are being asked to participate in the growth of the country. मुझे इकबाल का एक शेर है, क्योंकि विष्णु जी शेर बहुत पढ़ते हैं. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा. So together we can do that. So I'll not take any more time. I'll just pass on. Pujari Sahab, you know, I have a question for you. 24/7 electricity. The question is, you broach upon that concurrency of the subject, because when you do talk about coal, you talk about large power plants. That is easier because it's centralized, or big merchant plants are there. In some plants, state does come in. But when it comes to distribution, it is about implementation. It's about the policies, which are generally very good. Intention is also very good. It's the implementation which causes a problem. What different, I know you're not going to elaborate on the financial package, but whatever the financial package is, that's about the history. That will be the old losses. The problem has been in the old packages is that you give one package, and then you again start accumulating losses. So you have close to 300,000 crores accumulated losses. So what do we do? Probably will address that issue, whether the state get involved in owning that loss or whatever, it becomes part of the state aid. But what different are we planning, and how can the industry support in the future? The major difference that was difference between the last package that was declared in 2012-13 and current is that there is no financial support involved in that. What we basically doing is that to address the stock issue, as you say rightly, the stock issue is that they are sitting on a accumulated loss of 4 lakh crores and debt of about 3.7 lakhs crores. And so we address that issue separately. That's one issue. As far as future is concerned, what we are insisting is that we will enter into an individual MOU with each state with a specific trajectory on basically on 2 issues. What I pointed out, one is that the AT&C losses. We say that, okay, you are sitting here today, and within 2 years or 3 years, we are not even talking about 7 years, 2 to 3 years, you will come down here, number one. Number two, your average cost of supply and average revenue realization, that is ACS and ARR gap, which is on a national average today is 0.73 paise. That means your cost of supply is higher by 0.73 paise than the revenue. That means on an average, every unit that the DISCOM sells, they incur a loss of 73 paise. Now, that is different from each state. Some of the states is pretty high, some of the states are much lower. We're saying that that gap should come down. There's a specific trajectory. We'll be handholding the state DISCOM and the state government. And apart from this monitoring, we are using the technology. What we are saying is that you upgrade monitor is feeder. Let's monitor is feeder. You go for the metering and put all this information in the public domain, because with IPDS and the last RPA DRP, this information is available. The only thing is that you have to create the MIS, put it in the public domain, so there is enough pressure on the system to saying that they will improve. Further, since the message has gone saying that this issue needs to be addressed by the state government, is basically a state government issues. I will be happy to say that a lot of state government has in the last few months have taken strong initiatives when things have started showing up. If you state like UP, where
the issues were in some of the districts were quite acute. They have taken steps and things have improved. In many other states also things are improving. So the concern and the state government has realized saying that they have to address this issue. So it is a continuous dialogue, use of technology and little bit of restraining the state government and forcing them to take action. I mean, that's broadly I can tell. I'm not getting into the detail how it is to be addressed. I mean, that probably once the decision is taken out, it will be in the public domain. Sorry, I just have one more question for you, Mr. Pujari. What's the role of private sector do you see? In the morning we talked about PPP, and Mr. Anil Swarup said one particular model of PPP didn't work. In distribution as well, there are certain models which worked, certain models which didn't work. So we have success stories where privatization or franchising has worked. In other areas, it hasn't worked. What is the present view of the government about this, about involving private companies in either running the distribution system or part of the services? Because when you talk about using technology, I think there's more to it in the industry's opinion, which is people, processes, and then technology. If you just throw technology, in our opinion, it doesn't quite work, because we've seen issues about installation of equipment, use of equipment, and when you talk about technology, remote reading and all, data analytics, and what do you do with the data? So suppose there's theft there, somebody's got to go and act upon it. Data alone, it will not solve the problem. So what's the big vision on that, sir? See, when I talk about use of technology, I say that you use that. If you are not let's give an example. If the feeder is not meter or the transformer is not meter, you don't know what is the energy input to that and what is the energy output. Once you meter it and get the information on the real-time basis and put in a public domain, I know that this particular line has high losses. So there is a pressure in the system to improve it. What we have been asking the state government and the state government representatives here, they will also, respond to that. We say that you put or declare a officer as a feeder manager for each feeder, make him responsible and see whether those feeders are, whether the leakages are there or not. That's one part of it. That's the use of technology, putting in the public domain and creating a pressure on the system to improve. Secondly, as far as the role of PPP is concerned, franchisee has worked. I understand that Rajasthan at the moment is considering to, they are considering to involve private sector in giving franchisee. Some other states also are considering that. We are totally in support of that. And other thing is that the involvement of the private sector in both handholding, technology introduction, capacity building, and their managerial input. If some discoms, some private discoms are doing well, or even the equipment manufacturers are doing well, I think we should get interactive interaction with the state governments, give the information to them, handhold them, introduce the technology, and see that the technology is used and the information is used and the managerial decisions, whatever is required based on those MIS is taken. That's the broader idea. Thank you. Question, we talk about state, Mr. Ravi Kumar. You've been a state which has successfully implemented some of these schemes promoted by the center on your own initiatives as well. What are the challenges generally in implementing a scheme which is conceived in the center and then a state is asked to implement it? Or you think there is enough interaction and the kind of new initiatives which have been taken for DISCOMs to implement? Are you happy with them, or would you like to see some changes in them? No, most of the schemes being introduced by Government of India have been discussed with the states, and so there are not many issues in that. No state says that we will not implement this scheme, particularly on the technology front and the scheme front. On the financial restructuring, there are different ways and there are different problems. But on the path that we are taking now, particularly the two new schemes, the IPDS and the Deen Dayal Gram Jyoti Yojana, this is accepted across the board by all the states, and we're very happy to have this kind of scheme. Other schemes which are going to come up, particularly about the coal rationalization, is something which we all accept. It is part which is necessary. We don't see, states may have different governments, but we have no issue with the Government of India schemes at present, the way it is going. The other issues about
you know, in the association, we have the state outreach program where we're going and meeting different states. We've done about 6 states by now. We'll come to Karnataka again, and maybe we club it with Ilakrama. When you talk about buying quality equipment, the minister emphasized a great deal on buying quality, and if you buy quality, we can do wonderful things. Now, one of the things that association members often talk about, this practice of buying on L1 basis, not the ownership cost overall. You in Karnataka have done different things. What's your experience on quality performance of the equipment, and what different can be done in buying so that we are sure of lifetime cost rather than just initial cost of an equipment? See, once the technical parameters are fixed, as Secretary was saying now, that is, they are fixing up the technical, one cannot go below that. Now, once the technical parameters are fixed, then L1 is the best way we can do. We can see this life cycle cost, very easy to talk, but we have tried out in different sectors. It's not a very easy thing to handle, because the perception of the usage from the manufacturer and from the utility is completely different. So life cycle cost is really not working out. We'll see, we'll have to, but we have to fix the technical specs, and given the technical specs, L1 is the only way we can handle. Any other method I don't think is will be transparent. Mathur Sahab, you also run a utility. I'll ask you a banking question later on, but since you've run a state utility, what are your experiences? थैंक यू। ये बात सही है कि मैं 2004 से 2007 तक मैं राजस्थान में ऊर्जा सचिव था, और माननीय मंत्री जी भी यहाँ विराजे हुए हैं। सर, ये जो एक समस्या है क्वालिटी की, और विशेषकर मैं ट्रांसफार्मर के परिवेश में ये कहूँगा कि सर, ट्रांसफार्मर को कम से कम राजस्थान में एक लघु उद्योग के रूप में देखा गया, और सर हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चररों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी। हालांकि वो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अच्छी बात थी सन 90 के दशक में और पहले, लेकिन सर अब जहां चुनौतियां 1-1%, 2-2% जो लॉसेस हैं उसको हम किस पे आरोपित करें? क्या वो चोरी की वजह से जा रहा है, या जो ट्रांसफार्मर में बिजली गर्मी के रूप में जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉसेस हैं उस पे सर एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। तो हो क्या रहा है सर कि ये बात सही है कि L1 के रूप में हम एक प्राइस डिस्कवरी करते हैं। ट्रांसफार्मर किसी भी डिस्कॉम को हज़ारों की संख्या में खरीदने होते हैं और वो टेंडर निकालते हैं, तो कोई एक मैन्युफैक्चरर उसी राज्य में हज़ारों की संख्या में वो ट्रांसफार्मर नहीं बनाता, लेकिन बिडिंग के बाद सर जो वो एक प्राइस L1 की आ जाती है, उसी प्राइस पे ये बिजली के जो इंजीनियर हैं वो कई कंपनियों को उसी रेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट बांट देते हैं। अब वो जो और अच्छी कंपनीज़ हैं जो L1 नहीं आई थीं, वो फिर सप्लाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो उतने लो रेट पे अपना माल नहीं बेच सकती हैं। और उस पर सर जो गड़बड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि जो उन ट्रांसफार्मरों में जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको कोई चेक करने का पारदर्शी तरीका नहीं है। जो एक आध सैंपल सप्लाई होते हैं वो तो ठीक क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जब वो हज़ारों की संख्या में सप्लाई होती है तो सर उसको चेक नहीं कर पाते। तो एक जो मेरा सुझाव है एक सदन में वो ये है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, कि मतलब कोई भी चुनौती दे के किसी भी सप्लायर का जो प्रोडक्ट है उसको वो पूरी तरह से तोड़ मोड़ के उसका पूरा एक एक क्वालिटी के जो भी उसके पैमाने हैं उसको पूरे ट्रांसफार्मर को तोड़ के उसका जो टैंक है उसकी टैंक की मोटाई कितनी है, उसमें कॉपर कितना लगा है, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का सर जो प्रावधान है, और मैं माननीय सचिव महोदय से भी चाहूँगा कि सर हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के क्लॉज को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि सर कोई भी चेक नहीं कर पाता है कि सैंपल्स जितने सप्लाई हुए हैं जो ओरिजिनल सैंपल के बेसिस पे क्वालिटी गई है। तो काफ़ी लॉसेस सर बिजली कंपनीज के घटिया माल की वजह से हो रहे हैं, जिसमें अच्छी गुणात्मक स्तर के जो सप्लायर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज अब तक बन जानी चाहिए भारत जैसे देश में, तो आप देखेंगे ट्रांसफार्मर बनाने की छोटी कंपनीज बिल्कुल ऐसे बढ़ रही हैं जैसे कोई कॉटेज इंडस्ट्री है। तो मैं नहीं समझता कि सर हमको इस क्रिटिकल सेक्टर को जो इतना हमारे पूरे विकास से जुड़ा हुआ है उसमें हम कोई लिबरल स्मॉल स्केल पॉलिसी लाएं।
हमको बड़ी कड़क पॉलिसी लानी है। छोटी कंपनीज गुणात्मक स्तर के ट्रांसफार्मर और कई बिजली का यंत्र तंत्र नहीं बना सकती हैं, और ये कटु सत्य है। और इसलिए सर मेरे ख्याल से बड़ा एक हार्श निर्णय लेना पड़ेगा इस दिशा में। धन्यवाद। पुजारी साहब, मंत्री महोदय ने एक स्किल सेट की बात करी थी, स्किल सेट और तजुर्बा। जो हमारी डिस्कॉम्स की प्रबंधन या बिजली क्षेत्र पे प्रबंधन है, वो जैसे आप जैसे कई कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स करते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप आके उस क्षेत्र को समझते हैं, उसके प्रबंधन में लगते हैं, और फिर 3 वर्ष के बाद अच्छा काम कर रहे हैं, फिर 3 वर्ष के बाद में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये एक टेक्नोलॉजी और लोगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कई लोग इन्वॉल्व है, तो एक कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस जो रहती है, जैसे मैं उदाहरण दूँ, वेस्ट बंगाल में लॉसेस घटे, वो मलेडे साहब का ट्रांसफ़र हो गया। अगर ये प्राइवेट क्षेत्र में होता तो उनको गले लगाते, हम उनको $1 मिलियन का बोनस देते और उनको कंटिन्यू करते। तो will it be fair to say that we consider a cadre, like you have a cadre of administrative services, would you think of cadre of power sector managers, or because this is a fundamental sector, as a Minister Sir rightly said, would you think of developing a cadre of managers? It may come from IS or wherever it comes from, but for sake of continuity till we have this problem in the country, so that good officers continue to manage this well and they're rewarded suitably. Like you've done, I mean, I'll give why I suggest this is look at what we did with NTPC. You put best managers there, paid them well, and they've performed. You put best managers, good managers in PGCL is performing well. Would it be worth considering that we follow that model in DISCOMs? DISCOMs also, I understand that it is the MDs who are either professionals. In many of the DISCOMs, the MDs are professionals, or many of them are from civil service. In many of the states also, the DISCOMs MDs and CEOs are from IAS, and in many other DISCOMs, they are from the professionals. So it is at the top level, the MDs level only the civil service comes. Otherwise, the sector is managed by the cadre from the power sectors. We have per se, as from the Government of India side, we have no issue if professionals are inducted or the inside officers are promoted and appointed as MD of a DISCOM. In Uttar Pradesh also, there are people who have come up from the ranks and they have got promotion, and then they are managing the DISCOMs. It is totally left to the state government, but my point is that there is no one solutions. There are cases where the civil service who had been there for 2 years and 3 years and they have done wonderful work. I mean, there are cases where people who have come from the rank, they have done nice work. People coming from outside as professionals have done. In Gujarat, there are a few DISCOMs who people came from outside as a professionals, they managed. So it's all possible combinations are available. What we say is that it is up to the state government to take the most appropriate decisions. If they want to have a cadre per se, I think in indirect way there's a cadre there. I mean, only thing is that do you appoint somebody from the cadre as an MD, or you bring from outside? That the issue with the state government is this thing. But most probably it is purely in a federal structure, it is the state government who decides. I mean, obviously Government of India will not like to impose anything on the state government. So let me now come to answers that all of us are waiting to hear about: funding through banks. Now, because most of our customers have very difficult financial situation, I could technically say that some of them are bankrupt really, and those are customers, and for that reason, the credit rating of some of our members suffers when you go to a bank, that they look at who your major customers are, and वो समस्या है जो मंत्री जी ने भी बताई थी, और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. तो as industry, we are prepared to help DISCOMs improve their performance, but till that happens, this is a vicious circle, because we want to help them. एक तरफ जैसा विष्णु जी ने बोला, you don't get paid for 6 months, so it becomes a vicious cycle. What is the bank's opinion about this, about funding in small scale? So, question to you first, and then I'll come to exports and ask Mr. Mathur and then Mr. Bapat. Thank you, Babu.
See, before taking the funding issue, just now you were talking about L1. There used to be, saying, okay, right now, because of 3C, CAG, CVC, and the CBI, the lot of L1-centric operations is becoming an imperative in the government operation. Somebody says, अगर L1 का system होता, तो ताजमहल कैसे बनता? I mean, this is a call which naturally we have to take in the course of the accountability, transparency, and many other things which we all are. Second thing also you told about the continuation and consistency of the person, the key person who are handling the particular sector. Normally, whenever there is some issue, we resort to a situation called change of management, where the demand is management of change. Many a times when we see, even in a more public platform, when there is a riot, let us say in a district, what we normally resort is a knee-jerk reaction, change collector and SP both. Where is the root of the region? Somewhere is. So we always treat the symptoms, not the root. Now coming back about the funding, the basic issue which requires the operation, not only the timely finance, adequate finance, at reasonable cost, in a transparent pricing mechanism. These are the 4 basic required things for any funding operations, especially the MSME ecosystem, because the role and importance of the MSME is so important, so significant in the present day context in the Indian economy, because in the last 1 decade, if you see, on an average, our growth rate, and the macro level which I am talking about, roughly it is hovering around 7, based on the different pattern of the registering and clocking the growth rate calculations. In order to fuel this growth rate from the single digit to the double digit, the fire in the belly left it is in the MSME sector. I think the Vishnu and Honorable Minister also mentioned this. Because the agriculture side, we know what are our constraints, what are our limitations. Now the second thing also become all the more important for an institution like IEEMA, that you are not only representing a large number of the MSME, you are also giving the very important ingredient called power. This factor input which plays a very significant role in fueling the economic expansion. And I can tell you, because I have been interacting to the Honorable Minister very often, the kind of the passion and the commitment with which the MSME ministry and the government of India in general has been paying to these particular sectors to fuel the economic growth and bring it to the double level. You can see the Honorable Minister which is, putting his heart and mind, everything with the passion for these particular sectors. Funding, which is one of the critical things which I mentioned to you, that 4 basic ingredients. It is not that the quantum of the fund which is required, it is also the type of fund. I can tell you I have gone deep because more than 1.5 decade I have been working in the finance side. More than around a decade I have worked in the industry side, including industry commissioner, principal secretary industry, and I have been headed the India biggest industrial infrastructure service provider, MIDC, for more than 3.5 years. What is required that when we get into the details of how the capital structure and the financial structuring of the project has been undertaken. One project just recently when I went to, in the field for inspection, the gestation period when you capital structure, you do it, then the initial moratorium required is 4 years. The loan was structured with a 2-year moratorium. The day you are sanctioning, you are giving 7 crore is the total fund requirement, you are giving 7 crore. But you are not giving the way in which it needs to be funded. So the day you have sanctioned and disbursed the money, you are telling the entrepreneur that you are getting into the tunnel. And this type of the major flaw which get into the things, and unfortunately many of our entrepreneurs, MSME entrepreneurs, they have, उन लोगों को जोश तो है, काम करने का भी सब चीज़ है, लेकिन इस तरह का guidance अगर नहीं मिलता है, we run into a problem and that problem becomes irreversible. It cannot get corrected subsequently. In order to take care of, I will be short,
In order to take care of these things, we provide credit plus strategy in this. Honorable Minister has, in fact, I'm grateful to him, he has already explained a couple of initiatives which the city has already undertaken. We provide umbrella, complete support in the form of the capital structure and also in the hand-holding things. The two things which comes in the picture when we start funding to the MSME. One, many of our SME, they don't have the proper prepared, transaction-based project report. Because naturally it is not your fault. What happened that most of the transactions till today, when we want to find out from the civil, from the credit bureau, because till yesterday we have been transacting, especially first generation entrepreneurs, we have been transacting, हम तो कैश में पैसा देकर काम करते हैं, तो हमारा तो क्रेडिट हिस्ट्री बना नहीं, अब हमारे पास क्रेडिट हिस्ट्री बना नहीं, तो हम क्या हैं, हमारा क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, क्रेडिट क्वालिटी क्या है, मेरा स्कोर क्या है, ये तो पता ही नहीं चलता है. That is very important what the Mudra is now putting in. The Mudra Bank, which Honorable Prime Minister, which has now started, and the campaign is going on. By 2nd of October, we are going to achieve for especially the SISU, that is the lowest category of the micro entrepreneurs. We are trying to encourage people, you do transaction based on certain electronic form, Mudra card and other things which we have put in. It is very tangibly going to transform the economic landscape of the whole country. The moment हम MSME की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाना है. जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड में आना चाहिए. आप देखोगे जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रमोटर हैं छोटे का, दोनों का NPA का लिस्ट जो कि बहुत भयानक होता है, छोटे लेवल में NPA का कंपैरेटिव बहुत कम है. They are interested to pay it back. First thing, they are not interested to borrow, and if at all they borrow, they are too keen to pay it back also at the earliest, unlike becoming a difficult borrower. But these type of things are not getting understood by the many of the lender. How it can be done? These things need to be put on the proper transaction on the electronic platform, and then use those data. Second thing, what is very important, I think it was mentioned by Vishnu Agarwal. What is happening? That large number of the MSME borrower, MSME entrepreneurs, वो तो अपने लिए तो सामान बनाएंगे नहीं, उनको तो किसी न किसी को बेचना है. And the moment it sells, then there is a trade receivable, and that trade receivables must come in time, normally 90 days, and 90 days में तो मिलता नहीं है. आप कमजोर हैं, आपके bargaining power तो it is not with you. Obviously you can't quarrel, you can't fight, you can't assert, and assert किए तो आप बाहर हो जाएंगे system से. तो उसको हैंडल करने के लिए we have come out with 2 schemes. One, right now already implemented, is called that we will give you the fund based on the credit guarantee of the buyer. We call it RFS schemes, Receivable Finance Scheme. So the credit worthiness of the buyer, that is a bigger corporate, including PSU, their credit worthiness will be accounted for providing these particular working capital instruments and will be lent to finance and discount actually the bills of the seller. Second thing what we have already done, hopefully we will be able to do it, we are proposing to have a joint venture with the National Stock Exchange, with couple of other, including the State Bank and ICICI and couple of other leading banker. We are putting a platform. In fact, it has been announced in the union budget also. It is a scheme called TRADES, Trade Receivables E-Discounting Scheme. And we have formed that joint venture. We have submitted the application to the RBI. This is important, so I'm taking 1 minute more extra time, Babu, sorry. Reserve Bank Governor has already told that by November we will be able to come out. We are 7 such applicants, and we are hopeful that we'll get it. We'll put all these receivables, you know that there is a problems what you told, the delay payment and factoring, felicitation council, these are all manual process. We will like to put it on the electronic platform. Whoever is the seller, their invoices and their bills will be put on the electronic platform, and it will be known to the whole world that if 90 days is the commitment, जो भी कोई कर रहा है, 90 days में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, it will be known to the whole world. When things are so transparent, I can tell you everybody will fall in line and discipline will automatically get percolating down. क्योंकि transparency and the sunshine is the best disinfectants. इस आधार पे हम लोग इस receivable problems को solve कर रहे हैं. Second thing which initially I mentioned, what is the type of the fund which is required?
the getting a debt capital, of course it is not that easy, but you can get it. But getting a equity resources is just impossible in the Indian context. And the CDB is not a lender, rather we believe more of a development finance institution, and we will like to create an ecosystem. We will like to create a wholesome environment where everybody will be able to get the credit based on their need, so that it is tailored to the need felt of the concerned entrepreneurs, especially in the current context where the large number of startups, now the Startup India movement which is taking place, it is IP centric, knowledge centric. They are collateral मांगोगे तो कौन देगा collateral? तो इसमें अभी देखिए एक और मेरा एक सुझाव है सर, जो मंत्री महोदय ने बोला, क्योंकि मुझे लग रहा है जो सुन के हमारे सदस्यों के सवाल और जो मंत्री महोदय ने बोला, जो अच्छा काम हो रहा है, जो आपने बोला, मुझे लग रहा है कि ये सारा संदेश हमारे मेंबर्स के पास पहुंच नहीं रहा है। दूसरा जो लघु उद्योग खास तौर पे है, उसमें ओनर ही सारी चीज़ें कर रहा है, उसके पास हो सकता है कहीं के पास अकाउंटेंट ना हो और ये सुविधा हो। तो मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि हम एसोसिएशन की तरफ से एक सेल क्रिएट करें, जिसमें हम आपसे अनुरोध करेंगे, मंत्रालय से अनुरोध करेंगे, और हम उसको फैसिलिटेट करेंगे कि जो आप अच्छा काम मंत्रालय कर रहा है और जो आप कर रहे हैं उसको हम अपने सदस्यों तक पहुंचाएं और उनकी आवाज़ आप तक लगातार पहुंचाएं। एक हम माध्यम बने कि डायलॉग लगातार होता रहे। तो उसमें अगर आप बैंक की तरफ से किसी को डिप्यूट कर दें जो हमसे रेगुलरली आके इंटरेक्ट करे, और हम मंत्रालय को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अगर वो एक लगातार सपोर्ट करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है, जो बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, वो संदेशा तुरंत पहुंचे, क्योंकि हो सकता है कि सम ऑफ आवर मेंबर्स इवन एज एन एसोसिएशन वी माइट हैव फेल्ड इन दैट ड्यूटी बिकॉज वी मे नॉट बी नोइंग एज वेल, सो वी लाइक टू इंप्रूव दैट कमिटमेंट। बहुत अच्छा, इनफैक्ट आई होल हार्टेडली वेलकम यू दिस सजेशन। इनफैक्ट फॉर कर्नाटका वी हैव साइंड अ फॉर्मल MOU for providing the funds to all the member CASIA. Karnataka, there is a Karnataka State Small Industries Development Association. So we have signed MOU. We encourage it. In fact, earlier we have been sending the Maha Connect newspaper when I used to be in Maharashtra. Here we will transmit all by email only. And number of initiatives which MSME ministry has already taken, like you have the incubation center series. All those things, probably it can be transmitted, and you will find that the people will be able to make use of all those things. So my question now to you, Mathur Sahab, Exim Bank, very well managed, very professionally managed, an example in what can be done. I can say out of personal experience also. Dhanyawad. So, sorry? Okay. Bapat Sahab, if you tell about your activities and the question that I'd asked, we will be for you as well, please. I think, of course, most of the points are covered, but what I would definitely like to say is that we are all talking about banking, and more of banking giving the finance for the infrastructure. I think one of the things that I noticed is that, the corporate bond market, if you see the other parts of the world, is more than 150% of their GDP, whereas here we are at less than 20%. So I think one of the areas that we should look at really for this kind of growth is that the corporates have to resort to some kind of a bond market. That's number one. And I think most of the people that who are facing difficulties is very rightly told by you. One is the information availability. There are so many schemes which people don't know, industry doesn't know, and I think that is very, very critical, that information dissemination is important. And I think lastly, what is happening, as you very rightly said about equity, that is something which is very critical to come by. Many a times we are getting lured by the IRR as the percentages and look at that, whereas the return on equity in the initial period is hardly anything. Now, if you want to attract equity players, it can't be that the ROE is at 2% and 3% for the first 12 years, where the equity player is not having any cash on the table. So I think we need to really, you take the power sector, you say the concession, then in that case, the debt profiles will need to really start linking with in such a way that there is some kind of funding which is available, and IRR and ROEs are getting somewhere related to each other rather than one-sided. I mean, that's one thing which I see that happening really most of the time. I have one more question which I think I'll ask any of from the bank, maybe Ms. Mathur or you.
There is a lot of model around the world when it comes to utilities, and Mr. Mathur, we've done in UK, you've been examined part of it. Yes. Is leasing Yes, equipment leasing, where- Yeah, I think, just to take on from what Mr. Bapat said and to add to what Shivaji mentioned, the opportunities for the IEEMA members, since we are sitting in that forum, is to look at the very large capabilities that the Indian electrical, your sector has to sell your goods and services globally. And I can tell you there are great examples. Mr. Chandak is sitting here and Mr. Kejriwal is here, and your good companies, Secure Meters and Genus. I can take many examples of extremely successful project exporting companies from India. Mr. Uma Shankar Saab is here. So you are aware that the potential for Indian companies to execute electrical projects globally has been time tested, well acknowledged, and we are, I think, really world leaders. And it's a huge opportunity for the MSME ecosystem to network with some larger anchor Indian companies and work in tandem, work in harmony, work collaboratively to secure large projects overseas. In fact, I was just sharing with Mr. Shivaji a recent email, sir, and I think all of us will be glad to know that just 1 week ago, the Government of India, the Cabinet has approved a 2% interest subvention scheme for Indian companies who are participating in strategic overseas infrastructure projects. So the example and the immediate implementation was that Exim Bank gave term sheets to 2 very large prestigious Indian companies, one in the public sector, one in the private sector, to compete in a neighboring country's very large $1.8 billion power project. So Exim Bank, at the behest of Government of India, with the approval of Government of India, has announced and has approved. So we will be giving the loan to these 2 Indian companies at only 1%. Not to these companies directly, it will go to the buyer. So that country, which is setting up the 1400 megawatt power project, will be taking loan from Exim Bank. And in fact, the bid condition was that the companies which participate in the EPC contract will have to bring the finance along with that. So these are really great strategic moves that the Government of India is now leading the way forward. And as soon as one of these Indian companies, only 3 bids were received, 2 are Indian companies, one is a Chinese company. And I have great hope. Of course, the bid evaluation has started 3 days ago. And I'm very sure one of these 2 Indian companies is going to win that bid. Now that will add to a lot of jobs and contracts to the ancillary companies which will be supplying to these 2 companies. And so the point I'm making is it's a huge global market out there waiting to be tapped. And the IEEMA should actually support the other companies which have not gone global to work with them, help them, support them. And I'm sure the larger players will be more than glad to get that whole ecosystem worked so that we work collaboratively and secure global contracts. And it's a massive, I would say it's a large profit margin that project exports from India can capture. Maybe the Power Ministry may also, lead the way in this. And sir, Exim Bank has financed more than $6 billion of power projects, electrical engineering, transmission lines globally, more than $6 billion. And I think the contracts still waiting to be awarded are in excess of $3 billion in Africa and in South Asia. So it's a very large market. I hope IEEMA keeps in touch with this massive potential and works towards that end. Thank you. And leasing finance, yes. So one innovative thing we did was Secure Meters. I can take the name because that's your company. So in a structured deal, 10 million pounds was given as a loan to a wholly owned subsidiary for supplying meters, prepaid meters in UK for gas and electric utility consumers. And the meter rent has been escrowed by Exim Bank under a structured deal. So the risks for Exim Bank have been mitigated because we have directly escrowed the electric meter rent from the consumers. And I think Secure Meters secured a fantastic contract. And
it's a My great deal. question was, Yeah. can we in India, because we have financial crisis with discoms and the industry is suffering. Yeah, but If so we could- these schemes were there in the past. In If the we- if past, we could- many if we could- discoms had these schemes when they would, I think 20 years ago in Rajasthan Electricity Board also, these kinds of schemes were there. When suppliers would actually sell, they lease their equipment and they could escrow. So you are absolutely right, those innovative things can still be thought of. Any other questions from the audience, please? We can take 2 or 3, 5 minutes. Couple of questions, please. But everybody's happy with the finances or with the policy. No questions? There is, okay, sorry. We have got some very valuable inputs from this August body. And as you very rightly pointed out, that distribution is the weakest link in the chain. And you had briefly mentioned that there is a problem on the political front also, although we didn't really go into it. As a transformer manufacturer in Rajasthan, we have been facing a huge problem of failures. And I believe that there is a very direct or indirect or very deep link with the political ecosystem, because the secondary side protection which is being provided into the transformers is being vandalized and broken and subverted. And because of that, the after effects is a lose-lose situation for everyone, including the entire country, because the transformers are burning, there's immense amount of power theft, there's a lot of ATC losses, and the discoms are in bad shape because of this whole thing. Now, until that issue is addressed, you can have smart meters, you can have a lot of other innovative schemes. You get, this feeder metering has been going on, then there was APDRP, then there was RAPDRP, and I'm sure these all are well conceived and very important schemes. But until the political issue is brought out into the open, into the forefront, is this really going to make a big difference? Let me put it in perspective, in the sense that when you talk about saying that discoms are in bad shape, it's not true all across the country. Let's limit ourselves, in the sense that if you really look at, it is a few states and the few discoms which the things are pretty bad. In a macro sense, if I indicate to you on about 6 states, and there are about 20 odd, or 16 to 17 discoms. If you look at the total losses, even at TNC, they constitute about 85%. So it is not that as widespread as all over. Yes, Rajasthan is a bad case. Rajasthan is one of the, I should not have taken the name, but now that you have named it, as far as the financial position is concerned, the discoms of Rajasthan they're in a very, very precarious situation. So there is this, keeping Rajasthan in mind, the scheme that we are working out, or to revive or restructure the financial position of the discoms, we are addressing that issue. To a large extent, yes, I did flag saying that there is a lot of political will also is required. And but point is that you can try to bring that sense in, but you cannot wait saying that, no, I'll wait for the political will to come and then I start acting. So that's why I'm saying that whatever is possible within the technical parameters or technical feasible, we should go ahead and do it. There are ways of doing it. As long, my point has been that put things in a transparent manner in the public domain. There are competition among states. There are states and discoms that we are watching in last at least 6-8 months. Things have started improving. And political level also people realize saying that there's no way they can neglect or treat discom separately from the state government. It is their own liabilities. They have to address the issue. And that sense and change we are definitely seeing. And in the last, I'll tell you, saying the last 2 months, we had several rounds of meeting for these states, the 7-8 states which are in difficult situation. In all the cases, except one state, the chief ministers, along with the power minister, chief secretary, finance secretary, and power secretary, they all attended the meeting they called by us. That we have escalated the issue to that level. So it's not the issue that saying that it is only a power department's issue in the state. We saying that this is your issue. Chief minister, power minister, finance secretary, everybody has to be involved to sort out the issue. So what we have managed is that bring a consensus saying that this is the issue which you have to address. And things are improving, hopefully, with
the action that we are proposing, I think in next 6-8 months, definitely some change will come in. I mean, that's, we can hope for the best. We can keep trying it and saying that, no, we bring this issue. And let me put very frankly, there are discoms, there are states where they're making profit. Yes, we don't want them to make profit. They are breaking even an operational profit of marginal nature also is good enough. That's what we want. So I'll just support what Mr. Pujari said. There are cases of states, you take Gujarat, which was loss-making, and after Mr. Modi decided, drove this hard, it became profit-making and 24/7 electricity. West Bengal did that. Again, these are state government-owned. In private, you see places like Delhi, which had losses 60%, down to 7%. Nobody else in the world has done that. 60% down to 7-8%. Bhiwandi, again, a case where the losses are very high, it's come down. So there are a lot of good cases as well, and there have been political will. It's not across. If anybody in the room has a mechanism of managing political will on the states, then we probably will be in a different business. Even UP, I think Agra Torrent is doing well. I think that now, look at the performance. I mean, They struggled in the beginning. in the beginning, yes. So, I mean, obviously now they say that there is, I mean, they themselves, you talk to them, they say that there is a huge change in the attitude of the political bosses. I mean, There's one point you missed in that statement, because we've all been in the sector for years, and theft is something which I've worked for 28 years now. There's a sociology here. It's not only the politics or utilities, sociology. And I think, I've been talking about this. I think as an association, we and with the government and state governments need to educate general public about the impact that theft has on overall performance of the economy, of the industry, of the government, everywhere. So political parties realize that you could win or lose elections because of electricity. But the customer education that if your neighbor is stealing electricity, what impact it has on you is probably not realized. What impact it has on the overall economy is not understood. So there is probably, in my opinion, a need for a collective effort for education. More questions, please. Good afternoon. My name is Vijay Karya from Ravin Group. Sir, taking forward what you said, the entire value chain of the generation, transmission, distribution, the DISCOM is paying to the generation, the transmission. Now, we've got a lot of Navratnas in the entire value chain, but none of them are DISCOM. So you've got an NTPC as a Navratna, you've got a Coal India as a Navratna, you've got a PGCIL as a Navratna, but when it comes to DISCOM, who is the ultimate payment authority for all these people, we are happy if they make a small profit. So don't you think it could speed up the process of transformation if we rob Peter to pay Paul? That means the finances or the money, the excess of money that NTPC or PGCIL, etc. have, it goes into the DISCOMs. It could alleviate the problem much faster. No, just because Coal India or NTPC are making money does not mean that we should reduce them, take it away and pass it on to DISCOMs. DISCOMs also can make money. It is not necessary, quite a lot of DISCOMs, as Secretary was saying. Many DISCOMs make money. In like Karnataka, all 5 DISCOMs are profit. This year they have made profits for different reasons. But the problem comes in reducing losses. You see, the regulator is taking care of all expenditure of the DISCOMs. But if they can make their operational issues, they can take care of the operational issues, I think DISCOMs also can do well. It is not required to take money out of the Navratnas and no, so as a short-term solution. As a short-term, because the DISCOM is paying. Yeah, DISCOM is paying. DISCOM is paying, but the payment of the DISCOM is also accounted by the regulator. It is not DISCOM. That is accepted, allowed by the regulator. So the DISCOMs are paying, DISCOMs have to do their job. As long as the DISCOMs can do their job and they are allowed to do their job, it should be okay. I don't think we are required to do heavy
Coal India or NTPC can reduce their profits. That's exactly what. It's okay. I mean, but that has been accepted with the regulator as long as the regulator allows it, because that is also being allowed with the regulator. I don't think there is any problem in that. One point I just mentioned when I spoke is the reduction in the cost of power. Let's understand the structure. Most of the PPAs that DISCOMs have with the GENCOs, old ones, are cost pass-through. So what is the incentive for the GENCOs to reduce their cost? Nothing. Because if any, suppose hypothetically, the quality of coal is not good, or there is a shortage of supply of coal, whatever they burn, they pass it on to the DISCOM as extra cost, because for them it doesn't make a difference. So what we are trying to harping now is that we are telling GENCOs, basically the CPSUs and the state government, of course, no issue, because state government is they are responsible for the DISCOM and their own GENCOs. But as far as government of India is concerned, we are saying that you are not only a GENCO for the Ministry of Power, the DISCOMs also belong to Ministry of Power. So let's understand very clearly, saying that where is the options where you can reduce your cost of power. One is AT&C losses. Yes, it is purely on the DISCOMs, but there is a cost of power. So the one we are telling is the swapping of coal linkage. I mean, in fact, we are also thinking long term, saying that the linkage is, suppose with a state GENCOs, they are not very efficient. Rajasthan, some of the power plants are highly inefficient. Okay. What we are saying is that you are carrying the cost from the mines, bringing it to your GENCOs in Rajasthan, you're producing electricity. Don't do it. We'll allow you to give this coal to a central GENCO or even a private IPP. Suppose he has a capacity, he's basically outsourcing. Here is my coal, you produce electricity near the pit head or somewhere better place at higher efficiency and give the power, I will wheel the power much cheaper. I mean, that's how you have to now to look at how to reduce the cost. So the point you are making is, I'm not saying that you transfer the money, reduce the profitability and change it, but make the system much more efficient so that the resources are used in the most efficient manner in the best utility to generate cheaper power. So these are difficult issues, but we are addressing. We prepared a concept paper, sent to the state government is agreeing. I mean, basically, prima facie they have agreed. Once the general consent is received, we will come out with a policy. I mean, idea is that reduce the cost of power also, which the government of India's responsibility it is. Coal, Ministry of Power and Railways, all three of us have to combine, work together to see. And my estimate, I think CRISIL has done a study saying that there's about a scope to reduce the cost of power 15 to 20% per unit if the efficiency of these three major ministries, they work together and come out with those measures to work more efficiently. So that is basically that area also we are looking at. So may I just make one comment? See, one of the figures is Rajasthan, of the total electricity consumed in 12 months, 43%, sir, is consumed by agriculture. So more than 10,000 megawatts of connected load kicks into the system only for 3 months in a year. And that is the challenge when the agriculture pricing policies in the country are only skewed towards growing of wheat and rice and other things. So the challenge, sir, is not only for the power ministry to look at some states' challenges in terms of their electricity system, but the political economy of growing wheat and the farmers not being weaned away from wheat to only doing the coarse crops. Second is, there is no strategy yet in my mind that can address the peaking power shortages and this whole culture that you will get 24/7, 365 days power. So without power outages, without interruptions in the supply, that is one challenge which I know for a fact last 5 years Rajasthan used to purchase peaking shortage powers as high as 10, 12, 15 rupees. And that was sold by NTPC and other private sector power market players came in. So the peaking power which was available on a barter mechanism with some DISCOMs got skewed by a so-called market mechanism, which my sense was not very competitively driven. So a lot of the losses, nearly 35 to 40,000 crores, Rajasthan has paid to purchase peaking shortages just because of a political mandate. Do not disconnect the grid. Somehow give me 24/7, because these are the political messages which is driving. So the firewalling of the DISCOM to shut down power supply and not pick up expensive power was probably facilitated by too many market players in the so-called electric markets which got developed. So I think we will need to look at how the pricing of peaking power
has, really gone up through the roof, and some private players have made a lot of money. Thank you. One last question, please, because we're running out of time. Good afternoon. I'm Prakash Chandrakar from Schneider Electric. My question is to Mr. Pujari. Government has a plan to inject 100,000 megawatt of solar and some more wind, so going to be very high renewable. Is going to solve, one is energy security problem, but it's going to create more problems also in terms of the management of the grid. It is also going to inject a lot of harmonics in the grid. All the devices what are connected today in the grid are not designed to take that kind of harmonics. It will start increasing the failure rate and so on. Do you suggest any kind of a grid code in coming time to really solve this problem ahead of time? So that's the first question. Second is, you mentioned 18,000 villages are not electrified, and Mr. Babu will just said that cost of no electricity is more expensive than having any kind of electricity. So do you see there is an opportunity of some kind of microgrid for those kind of a group of villages which can go in PPP model where there can be a participation considering, today we really have a problem of a market not growing. So do you see this can be another market where a manufacturer can join together and participate with the government on this kind of participating model? Thank you. I will take the second question first. This 18,000 villages which are not yet electrified, as you must have heard, Honorable PM has said that they have to be covered within 1,000 days. And we are working closely with the state governments to make it happen. Our preliminary estimate is that about 3,000 odd villages out of these 18,000 villages cannot be covered through grid. So either they have to have off-grid solution, and we are now examining, saying that how to address that. So we, along with MNRE, and we'll talk to the private players also, saying that how do we address this grid. That's at the moment, that is what it is. We have estimated about 15,000, 14,000 we can cover it through the grid with a reasonable cost. But certain villages, the cost is highly prohibitive. So there's an opportunity there. We'll come out, after our first round of discussion, internal discussion, once all the details are available, we'll come out and see how when we can involve the private players to participate in that. That's an opportunity, definitely. But the point he made was a very important grid stability point. Fuel mix, or what is the ideal fuel mix for a load curve of R types in different states, is an important thing. It also has an implied thing about when you're especially talking about rooftop solars. Rooftop solars probably will be put by people who have money. Those people are paying a higher tariff. He won't pay you for 320 days, but he'll use the system for 45 days. So, which means the problem will become more acute. And these kind of modeling probably needs to be done. I think we as industry can contribute to that. I appreciate, because I've been watching minister speeches and what the government's trying to do. First attacking the big ticket items, like you attacked coal, you're attacking big generation, now you're looking at DISCOM. But somewhere we need to have a forum where we talk about overall scenario and a strategy. And I'm saying as a responsible industry, we can contribute to that. And I'll give an example of that. We were in Madhya Pradesh. Before we went with our state outreach program with our members, we asked them, tell us what are the issues that you want our members to address. They gave us a set of questions. We went and made a presentation. Then they said, come and address a feeder and tell us how we're doing. So that work has started now. It's slightly slow moving, but to my mind, some of these will give long-lasting solutions. Because I'll tell you, as a technologist, my worry is sometimes in our rush to do things quickly, we may get it wrong. And it'll be big, costly mistake if we do that. So we will, I commit on behalf of the industry that we will give our inputs regularly, and I'm requesting the industry also that for the IPDS and other schemes, whatever inputs the government is needing, I know that there's a big rush about it, but whatever reasonable time is given, we will provide the inputs to you. Yeah, it's most welcome. We'll be definitely interacting with you. I mean, this, obviously, we're open to any inputs, and we'll be consulting time and again. We have been discussing with various stakeholders regarding any of our detailing. So, most welcome, and definitely we look forward to working together. Thank you very much. It was a very lively interaction, and I request all of you to join me to thank the usual way to our honored panel.
Thank you very much. We'll have, With this, we come to an end of the annual convention. And we will reconvene in this room for the annual general meeting. That is open only for members of IEEMA. And we will do that, although we are running late. Maybe it merits a 5 minutes bio break in between. So we reconvene only the members of IEEMA in this room after 5 minutes.